हेलो हेलो हेलो। मैं हूं दर्पण। आई एम द फाउंडर ऑफ इंडिया वॉइस फेस्ट और आज है 8 दिसंबर यानी कि इंडिया वॉइस फेस्ट 2023 का दूसरा दिन। दिस इज द सिक्स्थ एडिशन of India's biggest voiceover and dubbing industry conference and awards platform, and we are celebrating the craft and business of voice acting. इंडिया वॉइस फेस्ट सिर्फ एक इवेंट नहीं है, एक प्लेटफॉर्म नहीं है। ये भारत की वॉइस ओवर और डबिंग इंडस्ट्री की अद्भुत प्रतिभा को सेलिब्रेट करने का, जश्न मनाने का एक माध्यम है, एक मुहिम है, एक महोत्सव है। और पिछले 6 सालों से इस मुहिम, इस महोत्सव को हम जारी रख रहे हैं, आप सबके सहयोग, आप सबके प्यार की वजह से। आज है 8 दिसंबर और अगले 8 दिन, 9 दिन, क्योंकि ये इस बार 2023 में इंडिया वॉइस फेस्ट has become a 10-day mega festival that celebrates the magic of the spoken word, the magic of the five-letter word voice. इस जर्नी में, इस सफर में, इंडिया वॉइस फेस्ट के इस रोमांचक सफर में इस साल जिन स्पॉन्सर्स, जिन पार्टनर्स ने हमारा साथ दिया है, उनका धन्यवाद करने के साथ इस शाम की शुरुआत करते हैं। इंडिया वॉइस फेस्ट, India's biggest voiceover and dubbing industry conference and awards event, is conceived and curated by yours truly, Darpan, produced and organized by Sugar Mediaz. The main sponsors for this event are Sound and Vision Studios. The associate sponsors are Audio Magic. Our industry partners are Gulmohar Media, MnM Talkies, Aural Arts, and G-Corp Media. Our proud supporters are Surabhi, Javeri, Vyas, Neshma Academy of Acting and Voice Acting, KRG Kreative Studio, and Skylink Freight Forwarders Private Limited. I want to thank all of them for backing us, for supporting us, हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ खड़े रहने के लिए। कल की शुरुआत बहुत रोमांचक, बहुत कमाल की हुई, जहां पर हमने इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ बातचीत की, बातें की, बड़े मजे किए। और आने वाले 10 दिनों का, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वी सेट द टोन फॉर द कमिंग 10 डेज। और जैसा कि आप जानते हैं, 17 दिसंबर को होने वाला है ग्रैंड फिनाले मुंबई के रंगशाद ऑडिटोरियम में। 3 बजे से 7 बजे के बीच होगी अवार्ड सेरेमनी, अ स्टार स्टडेड ग्लिटरिंग अवार्ड सेरेमनी। और अगर आप भी उस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इस क्यूआर कोड को अभी क्लिक कीजिए एंड गेट योर डेलीगेट पास फॉर द ग्रैंड फिनाले। एंड इफ यू वुड लाइक टू जॉइन अस for the dinner and social networking party, you can get that pass too. So there are 2 kinds of passes. You can pick up the pass that you would like to choose. और क्या कह रहा था मैं लिटिल zoned out, sorry. आज की बात करें तो आज की शाम बहुत रोमांचक है, क्योंकि 2 कमाल की चीजें होने वाली है। एक तो अभी कुछ ही क्षणों में, कुछ मिनटों में हम शुरू करेंगे इंडिया वॉइस फेस्ट के वॉइस टैलेंट हंट का पहला क्वालिफाइंग राउंड। तो जिन लोगों ने हमें अपने 90 सेकंड के वीडियोस भेजे हैं अपनी एंट्री के तौर पर इस टैलेंट हंट के लिए, उनमें से कुछ लोगों के वीडियोस आज प्ले किए जाएंगे, कुछ लोगों के कुछ दिन बाद। सो वी हैव डिवाइडेड द एंटायर टैलेंट हंट क्वालिफाइंग राउंड इनटू 2 पार्ट्स which will be played on 2 separate days. इन सब में से टॉप के 3 या 4 कैंडिडेट्स को चूज किया जाएगा। हमारी जूरी उन्हें चूज करेगी एंड दे विल परफॉर्म लाइव in front of the entire industry on stage at the Rangshad Auditorium, and that live grand finale of the Voice Talent Hunt will be hosted by none other than the industry heartthrob, one of the finest voice artists in the industry, Rajesh Kawa. ये होगा रविवार 17 दिसंबर को। तो आज इस टैलेंट हंट के क्वालिफाइंग राउंड के बाद वी हैव अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन व्हिच इज अराउंड अ टॉपिक जिसके बारे में आज सबसे ज्यादा चर्चा है, जिसके बारे में आज सबसे ज्यादा कंसर्न है, जिसके बारे में आज पूरे देश की वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री बात कर रही है। यू गॉट दैट राइट, इट इज दैट 2-word threat that we think it is for the industry, artificial intelligence. So 8 baje we have a very special guest with us. His name is Mandar Natikar. He is the CEO of Neural Garage, and he has been very kind and generous to accept our invite to come and speak at this platform and help us understand, navigate the world of artificial intelligence and how does it affect us as a voice industry. और उनके साथ बातचीत करेंगे Mona Shetty from Sound and Vision Studios, Rajashri Sharma from Audio Magic, and myself. So please stay tuned for that as well. That is happening at 8 o'clock. But for now,
let's play a quick promo of India Voice Fest, and after that, we are going to play a few entries of the India Voice Fest Voice Talent Hunt 2023. तो अगर आप भी इनमें शामिल हैं तो प्लीज आप आराम से बैठ के देखिए. These entries are going to play back to back, और कुछ देर के बाद मैं फिर से हाजिर होऊंगा and we'll have some conversation once again. So right now I'm going away. We have a small break for a promo of India Voice Fest, and after that we're going to play some entries of the Voice Talent Hunt. I'll see you soon. Bye bye. You are watching this only on HBO. हैरी पॉटर, मैं तुम्हारा प्रोफेसर डम्बलडोर, तुम्हें बचा लूंगा. तुम यहाँ से भाग जाओ हैरी. हैरी, मैं तुम्हारा दोस्त रॉन. हैरी, मकड़ियां हैरी, यहाँ से भाग जाओ. शांत हो जाइए. अगले 40 पॉइंट्स जाते हैं गरुड़ दवार को. You're watching this only on Disney Channel. Scooby-Doo, Shaggy, Scooby Snacks दो. Behind Scoop Yellow. हाँ टैडी, मैं तुम्हारा दोस्त मिस्टर बीन. टैडी, कहाँ हो टैडी? डेक्स्टर की लैबोरेटरी, जहाँ ये बच्चा सबसे होशियार. Didi, मेरी लेबोरेटरी से निकल जाओ Didi. I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor. मला भाकरवडी, मला आंबा बर्फी, मला काजू कतली, मला गुलाबजाम, मला श्रीखंड. अरे हो, सगळ्यांना सगळं मिळेल. चितळे यांची प्रत्येक मिठाई इतकी स्पेशल आहे की प्रत्येक जण अगदी लहान मुलासारखा हट्ट करतो. चितळे बंधू मिठाई वाले, परंपरा 65 वर्षांच्या लोकप्रिय चवीची. इंसानों के लिए समंदर हमेशा से ही बेशकीमती चीजों का खजाना रहा है. हमारे लिए समंदर रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें जीवन प्रदान करता है. हम में से कई लोग अपने जीवन की बहुत सी जरूरतों के लिए इसी समंदर पर निर्भर होते हैं. PMPML welcomes you. This bus will go on route Naregaon to Shivajinagar. Please check and listen LED and announcement system for real-time information on bus route and next stoppage.
अशोकची आठवण आलीच तर कवाडं बंद करू नकोस. तुमचं कधी भांडण झालं असेल तर मी अशी का वागले याची चुटपूट सुद्धा नको. ती त्या क्षणाची गरज होती म्हणून संघर्ष झाला असं समज. वाह, कितनी प्यारी बिल्ली है. मुझे तो इसे गोद में उठाने का मन कर रहा है. चलो चलो चलते हैं. अरे नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा. वहां खतरा हो सकता है. तुम्हें जाना है तो तुम जाओ. हाँ. शुरुआत करते हैं ऑगी एंड द कॉकरोचेस से. भैया ये कॉकरोच मेरा पूरा खाना खा जाते हैं भैया. कॉकरोचो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा. अरे पहले पकड़ तो ले रे बाबा. क्या है तो यार शगल करो मेरा पूरा खाना खा जाओगा ना. ओए मुन्ना, ओए इन कॉकरोचों की तो बैंड बजा दूंगा. ओए तुम पिद्दी है. नहीं भैया थोड़ा बड़ा. ओए तुम पिद्दी है. नहीं भैया थोड़ा बड़ा. ओए कोई नहीं जीत सकता मुझसे. बिल्ला भी सोकर उठा है. अरे वहां मत जा, फंसेगा. फंस गया. अच्छा है. Hi guys, myself is Ranbir Kapoor and I just want to tell you that have you watched my latest film ब्रह्मास्त्र. अरे संजू की जगह तू ब्रह्मास्त्र बोलेगा तो कैसा चलेगा रे. अभी जैसा मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि नाक से बात कर रहा हूँ, लेकिन वही अगर मैं अपनी गले से बात करूँ तो करते 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 मैं सलमान खान बन जाऊंगा. कमाल करते हो यार. एक बार जो मैंने अपनी कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं अपनी खुद की भी नहीं सुनता. आर्थिक नियोजन, समज, गैरसमज आणि वास्तव. मित्रहो, आर्थिक नियोजनाबद्दल स्वतःचे निर्णय घेताना अनेकदा गुंतवणुकीसंदर्भात, त्यातील अनेक पर्यायांबद्दल, ध्येय निश्चिती करण्यासंदर्भात अनेक प्रश्न पडत असतात. निवडलेल्या पॉलिसी योग्य असतील का, आपण करत असलेली गुंतवणूक योग्य आहे का, असे एक ना अनेक प्रश्न आपल्याला सातत्यानं पडत असतात. यावर पर्याय ठरतो तो म्हणजे अधिकृत आर्थिक नियोजनकाराकडून आर्थिक नियोजन सल्ला आणि त्याचा आराखडा तयार करून घेण्याचा. आज़ाद भारत में सरदार पटेल के योगदान को देखते हुए भारत सरकार के पहले मंत्रिमंडल में उन्हें उप प्रधानमंत्री, गृह, सूचना और रियासत मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली. गृह मंत्री के रूप में उन्होंने भारत की एकता, अखंडता के लिए ऐसे सपने को यथार्थ के धरातल पर उतारा जिसकी कल्पना करना तत्कालीन समाज में संभव नहीं दिख रहा था. छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण कर उन्होंने असंभव को संभव कर दिया. इसे स्वतंत्र भारत की महानतम घटना भी कहा जा सकता है, जिसके कारण भारतीय भूखंड में राष्ट्रीय एकता का निर्माण हुआ. हैरी पॉटर, एक जाने माने विद्यार्थी, आपका स्वागत है हॉगवर्ट्स में होने वाली त्रिकोणीय श्रृंखला की स्पर्धा में. इसका मार्गदर्शन आपको टॉबी करेंगे. हैरी पॉटर, मैं टॉबी, एक घरेलू चिन्ह, आपको बताना चाहूंगा सर कि आपसे मिलके मुझे कितना अच्छा लगा सर. अरे क्या बार बार सर लगा के रखा है. जब देखो तब हैरी पॉटर हैरी पॉटर हैरी पॉटर. मुझे तो देखना है हैरी पॉटर का नया आने वाला पार्ट, जो नई सीरीज आने वाली है, लेकिन मुझे तो देखने को ही नहीं मिलती. जब देखो तब हैरी पॉटर हैरी पॉटर हैरी पॉटर. अरे मुझे कब दिखाया आपने हैरी पॉटर? मुझे एक बार भी हैरी पॉटर देखने को नहीं मिला. मैं चाहती हूँ कि देखने को मिले. अरे आपको कितने बार देखने को बोला है, लेकिन आपको दिखाया भी इन्होंने. अरे नहीं दिखाया. अरे दिखाया है. अरे नहीं दिखाया. मैंने कितनी बार खाई ने मुझे दिखाओ दिखाओ दिखाओ, बट उन्होंने मुझे नहीं दिखाया. मैं चाहती हूँ कि मैं देखूं, लेकिन मुझे कोई. अरे मैंने कितनी बार तुम्हें कहा कि चलो मेरे साथ, लेकिन तुम तो नहीं आए. अरे मैंने कितनी बार आपको बोला, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी. थैंक यू सो मच गाइस. Category name, character voices, and the first character that I'm gonna perform is Shinchan. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिनचैन युहरा. मेरी उम्र है 5 साल और मुझे इंडिया वॉइस फेस्ट के लिए परफॉर्म करके बहुत अच्छा लग रहा है. Second, Dobby from Harry Potter. Harry Potter should have to listen to Dobby. Harry Potter should go back home when he missed the train. Third, Mr. Bean. Hello,
This is Mr. Bean. Have you seen my teddy somewhere? Where it is? Oh, it's here. Third, I would like to perform Bo-chan from Shinchan series. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बो और मुझे पत्थर इकट्ठे करना बहुत पसंद है। Next, I would like to do Donald Duck. At last, I would like to perform a conversation between Light Yagami and Ryuk from the series Death Note. Ryuk, are you sure about it? Yeah, I'm sure nobody's following you. Really hope you're not saying what you think I want to hear just to get some apples. Oh, hold it right there. I just flew out and checked and there was no one. So yeah, for the last time, I'm sure. तुम पहले से ही सब कुछ जानती थी ना? हाँ, तुम पहले से ही ये बात जानती थी कि राजस्थान की मेडिकल हिस्ट्री में मुझसे पहले भी कोई है। इसीलिए तुमने जानबूझ के हिस्ट्री क्रिएट करने वाली बात की। तुमने जानबूझ के मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मैं नंबर 1 नहीं हूं। मिमिक्री। ए मक्खन मलाई, छोटा बच्चा है तू। ये चिराग ने तेरे को क्या थकेला माल चिपका दिया है? चल वटक ले खजूर। मिमिक्री। आज दुर्गाष्टमी है, तेरा गला काट के तेरा खून पीना है, तेरे मुर्दे पे मुझे तांडव कर रहा है। कमर्शियल वॉइस ओवर। एक बात बताइए आप, खीर की खुशबू कभी फोन पर आई थी? याद कीजिए, एग्जाम से पहले दही और पास होने पर मिठाई फोन पर तो नहीं खाई थी ना? आपकी माँ ने भी आपके लिए ये सब जरूर किया होगा, इसीलिए इस दिवाली उन्हें फोन मत कीजिए, कुछ मीठा लीजिए और उनके पास जाइए। वैसे भी फोन पर पैर तो नहीं छू सकते ना, तो इस दिवाली अपनी माँ को कुछ सरप्राइज देते हैं कैडबरी सेलिब्रेशंस के साथ। कैडबरी, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। Diana, Princess of Wales, the most famous and photographed woman in the world. For her public, her beauty and glamour are instantly recognized. Her life, an endless source of fascination. As a leading figure on the world stage, she is constantly in the limelight. Wherever she goes, the cameras follow. But her enthusiasm is genuine and the flowers given with love. It's a unique relationship. Rain or shine, Diana is the people's favourite. Marriage to Prince Charles, heir to the British throne, brought on immediate spotlight. But it's her natural openness and charm that has created a truly captive audience. Badruddin Jamaluddin Qazi was one of the 12 siblings in a weaving teacher's family. The family relocated to Mumbai after his father lost his job. In Mumbai, Qazi worked as a bus conductor for BEST, where he became popular for entertaining passengers with his humorous announcements and impressions. Qazi always harbored dreams of a film career, admiring actor Noor Mohammad Charlie and emulating movie stunts. Nature's lavish. My want, my confidence. Liquid lipstick that lasts up to 12 hours. It's transfer proof, smudge proof, and waterproof. ओए, मुझसे पंगा लेगी? देख नहीं रही मेरी बॉडी? एक मुक्का दिया ना तो जाके गिरेगी पिद्दी। ए मोटू, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं बॉडी एंड माइंड दोनों से सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। मेरी मम्मी मुझे रोज एक ग्लास बॉर्नविटा मिल्क जो देती है। Welcome to GV's VO World. Press 1 to continue in English. हिंदी में सुनने के लिए 2 दबाएं. To go back to the main menu, press star. अब JCB लाया है आपके सपनों को साकार करने के लिए JCB Eco Excellence Range of Backhoe Loaders. तो ना अब कोई शंका, ना कोई समस्या, काम जो अब दुनिया देखेगी। भारत के अग्रणी निर्माण उपकरण निर्माता JCB का Eco Excellence Range of Backhoe Loaders सभी अटैचमेंट्स के साथ। थैंक यू।
तो पे किंवा खा एकच सवाल आहे डायटिंग. बघावं किंवा खावं एकच सवाल आहे डायटिंग. या किचन मधल्या विस्तीर्ण पसरलेल्या डायनिंग टेबलवर वेगवेगळ्या चवदार चटकदार पदार्थांकडे नुसतंच पाहावं की पाडून टाकावा फडशा त्या पदार्थांचा आणि करावा सर्वांचाच शेवट लाडवाचा, जिलेबीचा, गुलाबजामचा, इडलीचा आणि शेवटी या डायटिंगचा सुद्धा. लवलवत्या जिभेने त्या लाडवाला असा काही डंख मारावा की नंतर येण्याला निद्रेला नसावा जागृतीचा किनारा कधीही. पण आमचं वजन वाढू लागलं तर इथेच तर खरी मेख आहे. डायटिंगच्या नावाखाली आम्ही ओलं सुख काही गिळत बसतो, सहन करत असतो आमच्याच चटोरेपणावर होणारे परिणाम आणि भरत बसतो या डायटिशियनची भरमसाठ बिलं आणि मग आमच्याच घरात हुडकत बसतो पदार्थांचे डबे. अन्नपूर्णे, तू एवढी कठोर का झालीस ग? एका बाजूला जिला आम्ही वेगवेगळे पदार्थ खाऊ घातले ती आमची बायको आम्हाला डिवसते, हे खाऊ नका ते खाऊ नका, आणि दुसऱ्या बाजूला जिने आम्हाला या पदार्थांच्या चवी शिकवल्या ती तूही आता आमच्याशी असं वागतेस. मग विस्कटलेल्या या देहाचे गोळे घेऊन या ढेरपोटानं कोणत्या घालवायच्या घरावर तुळशीपत्र व्हायचं ग? तो पे किंवा खा एकच सवाल आहे डायटिंग. दुर्योधन पुनीतिश्चर. मैं बर्बाद हो गया हूँ पितामह, पांडवों ने मेरा सब कुछ छीन लिया है. पितामह भीष्म मुकेश खन्ना. अरे पुत्र, तुम तो नादान हो, तुम तो भीम के पीछे उंगली करते रहते हो. नवाजुद्दीन. भाई मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई किसी के पीछे उंगली करता है. पंकज त्रिपाठी. देखो, ऐसे फालतू में किसी के पीछे उंगली करते रहोगे तो दुश्मन बढ़ेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. अमित शाह. अरे दादा, आप जैसे सीनियर पॉलिटिशियन को ऐसे उंगली करना शोभा नहीं देता दादा. आप लोग मुझे रास्ता दिखाइए. सुनील दा. शरा, अभी तुम्हारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है. अमरीश पुरी. अरे भाई, अब तो तुम्हें एक ही रास्ता दिखा सकता हूँ, वो है आखिरी रास्ता. कैरेक्टर वॉइस मोटू. अरे पर भैया, किस बात के पार्टी चल रहे हैं? डॉक्टर झटके. ओए मोटू, मैंने एक कैप्सूल बनाया है जिसे खाने से सबके शरीर से खुजली होगी. घसीटा राम. उगी बाबा, वो कैप्सूल मुझे जल्दी दो, मुझे भी पूरा शरीर खुजली करना है. अरे पर भैया, वो कैप्सूल तो मुझे भी चाहिए. पतलू. अरे मोटू, तुम्हें पता है ना डॉक्टर झटके का दवाई का क्या असर होता है? मत खाओ मोटू, मत खाओ. कैटेगरी कैरेक्टर वॉइस एंट्री 1. स्ट्रेंज, कौन है ये जिसने कुमोलिका को पलट के नहीं देखा? हु इज ही? हाउ अनलकी, देखा ही नहीं होगा. देख लेता ना तो ना नजर हिलती ना पैर. कैटेगरी कैरेक्टर वॉइस एंट्री 2. तुम खुद से झूठ बोल सकते हो, सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, पर तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते. तुम चले गए ना तो मिष्टी अग्रवाल की जान चली जाएगी, और अपनी जान को इतनी आसानी से नहीं जाने देता. कैटेगरी स्टोरी टेलिंग.
ये कहानी तब की है जब फ्लैट्स नहीं घर हुआ करते थे। धुआं उड़ाती हुई गाड़ियां नहीं, ट्रिंग ट्रिंग करती हुई साइकिलें हुआ करती थी। और हमारी हीरोइन भी कोई मॉडल नहीं, एक सीधी सादी लड़की थी। कुछ सपने थे उसके, शेफ बनना था। हालांकि उस वक्त उसे ये शब्द पता भी नहीं था। कैटेगरी वॉइस ओवर टाइप कमर्शियल। खीर की खुशबू फोन पर आई थी। बीमार पड़ने पर किसी ने पट्टियां फोन पे तो नहीं रखी थी। आपकी माँ ने भी आपके लिए ये सब जरूर किया होगा। तो इस दिवाली माँ को फोन मत कीजिए, कुछ मीठा लीजिए और जाके मिलिए। कैडबरी सेलिब्रेशंस, कुछ मीठा हो जाए। मैं वजीटा, एक शाही योद्धा। मेरी उंगलियों में ताकत है इस दुनिया को खत्म कर देने की। मैं एक शाही खून वाला सुपर सैयन हूँ कैकरॉट, और मेरे कंधों में जिम्मेदारी है इस डूबते हुए योद्धा जाति को बचाने की, इसके शान की। हेलो, आपने शायद ये सोचा होगा कि एक स्वीट सिंपल इंस्पिरेशनल टाइप की सुपर हीरो मूवी है, लेकिन उस लाल सूट वाले बंदे ने दूसरे बंदे का सीख कबाब बना डाला। तो सरप्राइज, ये सुपर हीरो मूवी थोड़ी हट के है, और इसे बताने के लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना होगा और अपने प्रोड्यूसर्स के तलवे तक चाटने होंगे। जिंदगी है 4 दिन, काश होते 5 दिन। जिंदगी है बड़ी अनमोल, सब बोले यही बोल। तो ढिंचक 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 ढिंचक। जिंदगी है गमों से भरी, तो छोड़ो टेंशन, आओ पिए मलाई मार के हम लस्सी। बॉस, अगर रियल सुकाम किसी को आपने भरोसा किया होता तो ये दिन नहीं देखना होता। अगर पैसा सीधी तरह से ना निकले तो रियल सुकाम किसी को उंगली टेढ़ी करनी आती है। होंडा, अपनी बाइक स्टार्ट कर, चल मेरे चीते, दौड़ा दे बाइक। भैया, लगता है आप फिर से पागल हो गए हैं। मैं कॉकरोचों के साथ रह लूंगा, लेकिन आपकी ये पागलपंती बर्दाश्त के बाहर है। आप मेरे घर से निकल जाइए भैया। ओए, मैं तो यहाँ का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, इस दुनिया का पापा। अगर कोई मेरे सामने आएगा तो उसे तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, और उसके ऊपर अपने नाम का झंडा गाड़ दूंगा। वो सावन का महीना था, 26 जुलाई 1999। एक तरफ झूम कर बहार आई, एक तरफ वादियां जलाई गई। कारगिल की हसीन वादियों में रहने वाले लोग चैन व अमन की जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि इस खुशनुमा खामोशी के पीछे एक तूफान खड़ा दस्तक दे रहा है। एक नन्हा मेमना और उसकी मां बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी संकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तक तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। इधर शेर के कदम धरती नापे, उधर वो दोनों थर थर कांपे। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे मेमने को थामने। छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल, क्या तुम सचमुच हमें खा जाओगे एकदम कच्चा? शेर मुस्कुराया, अपना भारी पंजा मेमने के सर पर फिराया, बोला, हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, चिरायु भव, दीर्घायु भव, कर कलरव हो उत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आशीष देता ये पशु पुंगव शेर, कि न होगा अब कोई अंधेर। उछलो, कूदो, नाचो और जियो हंसते हंसते। अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान, बेटा ताजुब है, भला शेर भी किसी पर रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। हैप्पी रहना आपकी चॉइस है, हैप्पी की तरह। दिल तो हैप्पी है जी, जल्द स्टार प्लस और हॉटस्टार पर चेंज। हैप्पी रहना आपकी चॉइस है, हैप्पी की तरह। दिल तो हैप्पी है जी, जल्द स्टार प्लस और हॉटस्टार पर। स्कूबी स्नैक्स चेंज। अरे भैया, हैप्पी रहना आपकी चॉइस है, हैप्पी की तरह। दिल तो हैप्पी है जी, जल्द आ रहा है स्टार प्लस और हॉट स्टार प्लस। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना इतना फायदेमंद कभी नहीं रहा। पेश है क्रेसेंट वाइटैलिटी ऐप, एक ऐप जो आपको कुछ ही टैप्स में आपके स्वास्थ्य को जानने, ट्रैक करने और बेहतर बनाने में मदद करता है।
इसका उपयोग करना है आसान, ये सुरक्षित है और इसके रिवॉर्ड भी है, विशेष रूप से क्रेसेंट ग्राहकों के लिए। अपनी वेलनेस यात्रा शुरू करने के लिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से क्रेसेंट वाइटैलिटी ऐप डाउनलोड करें। Looking for a simple and effective way to promote your brand on platforms like Facebook, Instagram, YouTube, etc. and attract more customers to your outlet? We heard you. With the new Wiggy Smart Link feature, you can now advertise your brand on any social media platform. Improve your visibility, attract more customers, and earn more ratings for your brands. Available in the Wiggy Partner web and mobile app, the Wiggy Smart Link will help you market your brand with one unique link for all your brand outlets and redirect your customers automatically to your closest outlet to them. चमकू चौथी बार चौथी कक्षा में फेल हो गया था। उसके पापा ने उससे नाराज होते हुए पूछा, अरे चमकू, तुम फिर से चौथी कक्षा में फेल हो गए, ये क्या चल रहा है? चमकू ने थोड़ा डरते हुए कहा, क्या करूं पापा, बहुत कोशिश करता हूं लेकिन पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। चमकू के पापा ने आश्चर्य से पूछा, मन नहीं लगता तो क्या करने का मन करता है? चमकू ने बड़े जोश से कहा, डांस, वो मेरा सबसे फेवरेट है। सब कुछ छोड़ के सारा दिन बस डांस करना पसंद करता हूँ। चमकू के पापा ने निराश होते हुए अपना सिर पकड़ा और कहा, गई भैंस पानी में। What is home? Is home your shelter? Is it your sanctuary? Or is it simply an idea that transcends beyond the concept of comfort? Is it a place that makes you want to snuggle inside your warm bed on a cold morning? Or is it a place to unwind after a long, hard day? Is it a place to gather your thoughts? Or is it a place to discover your mind's limitless creativity? This was the qualifying round of the India Voice Fest Voice Talent. ये पहला क्वालिफाइंग राउंड है और अगर आपने देखा तो कमाल कमाल की टैलेंट है हमारे देश में। इंडिया वॉइस फेस्ट की आई थिंक सबसे खास बात ये है कि ये एक बड़ा ही इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है where anyone from anywhere in the country can get a chance to get his or her voice heard. पैंडेमिक के दौरान जब इंडिया वॉइस फेस्ट एक हफ्ते का इवेंट हो गया था, तब हमने रियलाइज किया कि इस देश में वॉइस एक्टिंग को लेकर कितनी कला भर भर के है और देश के छोटे छोटे गांव, कस्बों, शहरों से लोगों ने अपनी एंट्रीज भेजी हैं पिछले कुछ सालों में। और मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछले कुछ सालों में इंडिया वॉइस फेस्ट के इस टैलेंट हंट की वजह से कई जिंदगियों में बदलाव आया है, कई लोगों को इस इंडस्ट्री में मौके मिले हैं और मुझे लगता है इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म को ये चीज बड़ी सार्थक बनाती है कि a platform like this helps open doors of opportunities to people with real talent. So the word real talent is important. तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जितनी एंट्रीज आपने देखी हैं या आने वाले दिनों में जिन एंट्रीज को आप देखेंगे वो सब ही बहुत टैलेंटेड हो। मुझे लगता है हम जज्बे को सल्यूट करते हैं, हम आपके जज्बे को रिस्पेक्ट करते हैं, बट आपको भी इस बात को रिस्पेक्ट जरूर करना है कि हमारी जूरी जो आपकी एंट्रीज को देख रही है, आकलन कर रही है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे, बल्कि वॉइस एक्टिंग एक ऐसी कला है जिस पर महारत पाना या जिसमें पारंगत होना बहुत मुश्किल है और सालों का अथक प्रयास, डेडिकेशन, परसिवियरेंस, पेशेंस and a lot of learning is required. So let us not be under this illusion कि कहीं पर हम कोई एक
टैलेंट हंट में पार्ट ले लेंगे और हमारी लाइफ बदल जाएगी। जिन लोगों की लाइफ बदली है उनके लिए भी ये वॉइस टैलेंट हंट महज एक फर्स्ट स्टेप रहा है, महज एक कैटलिस्ट, एक जरिया रहा है। All the credit to those people over the last few years who have started making a mark in the industry. After starting with the India Voice Fest Talent Hunt, the entire credit for their success goes only to them. And if you are one of them, then the credit goes only to you. क्योंकि इस तरह का कोई भी platform can only give you an opportunity. What you make of that opportunity is completely up to you. So इस सेगमेंट को, इस टैलेंट हंट को मैं मेरे दिल की बहुत करीब रखता हूँ और साल दर साल हम देखते हैं कि कई लोग जिन्होंने पिछले कुछ सालों में वॉइस टैलेंट हंट में पार्ट लिया था इंडिया वॉइस फेस्ट के, इस बार उन्होंने मेन स्ट्रीम अवार्ड्स में पार्ट लिया है। इस बार उन्होंने अपकमिंग वॉइस टैलेंट अवार्ड में पार्ट लिया है। मुझे लगता है ये दर्शाता है कि जो जुझारू लोग हैं, जिनके अंदर एक डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, सक्सेस को चेस करने की हंगर है, वो किस तरह से अपग्रेड होते हैं लाइफ में। Someone who took part in a talent hunt for rookies and beginners is today competing with veterans. So I think this is a very very big compliment for our platform. और इस चीज का क्रेडिट मैं जरूर मेरी टीम की तरफ से लेना चाहूंगा। पिछले कुछ सालों में हमने बहुत प्रयास किया है कि देश को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहां पर every voice can get an opportunity heard. Every voice, अगर आपके अंदर कला या टैलेंट का एक भी कण है तो आपको उसे यहाँ दर्शाने का मौका मिले। So I hope you appreciate this. I hope you appreciate the effort that goes into it. और आने वाले दिनों में अगली बार, I think अगले हफ्ते में एक और इस तरह का सेगमेंट होगा जहां पर बाकी की जो एंट्रीज हैं उनको प्ले किया जाएगा और हमारी जूरी इन सारी एंट्रीज को असेस करके टॉप के शायद 4 या 5 या 3 जो टॉप के कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट करेगी और वो कैंडिडेट्स जो हैं मुंबई में परफॉर्म करेंगे 17 तारीख को रंगशाला ऑडिटोरियम में पूरी इंडस्ट्री के सामने। आप शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि इंडस्ट्री के दिग्गजों के सामने किसी स्टेज पर किसी नौसिखिए को जब एज अ वॉइस एक्टर परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो उसके मायने क्या होते हैं। मैं अगर खुद की बात करूं, आज मुझे इस कला में, इस इंडस्ट्री में एक क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी हो गया है, 25 साल से ज्यादा हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं नया नया इस काम में, इस कला में आया था, तब अगर इस तरह का मौका या इस तरह का प्लेटफॉर्म होता तो शायद मुझे या मुझे से किसी और को जिसके अंदर प्रतिभा या कला थी उसे इस इंडस्ट्री में आगे जाने का जल्दी मौका मिलता, उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती। So that's something that I really wish that would have happened earlier. But nevertheless, this is your time. This is the time for you to exploit and explore your talent as a voice actor. और इस लंबे चौड़े भाषण के बाद मैं आपको एक ब्रेक दूंगा। We'll play a small promo and after that I'm going to come back with someone very interesting. कहीं मत जाइएगा। वैसे आपको पता ना 8 बजे या 8 बजने से कुछ मिनट पहले we are going to start probably one of the most awaited sessions of India Voice Fest 2023, which is artificial intelligence. Is it an enabler or is it a disruptor for the voiceover and dubbing? इस सेशन को बिल्कुल मिस मत करिएगा। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं और उसके बाद आपको एक बड़े प्यारे शख्स से मिलाते हैं। एक बार पुराना सा
हेलो एवरीवन, ये है इंडिया वॉइस फेस्ट 2023 का दूसरा दिन। टुडे इज द 8th ऑफ दिसंबर और आने वाले 8-9 दिन बड़े रोमांचक, बड़े ज्ञान से भरे हुए होने वाले हैं। और 17 तारीख को हम सब मिलेंगे इंडिया वॉइस फेस्ट के ग्रैंड फिनाले में इन मुंबई। अगर आपने अभी तक अपना डेलीगेट पास नहीं लिया है तो प्लीज इस लिंक को क्लिक कीजिए और इस लिंक को, कहाँ गया, ये मेरा, हाँ ये इस QR कोड को क्लिक कीजिए और अभी अपना डेलीगेट पास लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस बार इंडिया वॉइस फेस्ट में हमने एक प्यारी सी चीज शुरू की है, या एक प्यारी सी चीज शुरू करने की कोशिश की है। कई हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री के बाहर, जो लोग बड़े जुझारू हैं, जो होम ग्रोन बिजनेसेस कर रहे हैं। और ये वो दोस्त हैं जो बड़े शिद्दत से, बड़े जुझारू तरीके से अपने बल पर अपने ब्रांड्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं। These are people who are running small homegrown businesses and they are doing a fantastic job at that. तो हमने सोचा क्यों ना इस बार एक सेगमेंट शुरू करें जिसका नाम है Friends with Brands. So India Voice Fest is very happy to support our friends who have some lovely brands. और आज हमारे साथ इन्हीं में से एक शख्सियत है जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा, पर उसके पहले एक छोटा सा 10 सेकंड का प्रोमो देखिए। So you saw 3 logos of Friends with Brands. One of them is Hummus by Rakhi. And I have on the screen my very dear friend Rakhi Bimsaria. Can we have her on the screen, please, Anand? Hi Rakhi, how are you doing? Good evening. Rakhi, you are on mute. You have to just unmute yourself. One second. No, I am not on mute. 1 second. Okay. No, I think you're still mute, Rakhi. You're still on mute. I mean. So friends, Rakhi Bimsaria is a dear friend and she runs this amazing little brand called Hummus by Rakhi. And let me tell you that Hummus by Rakhi is possibly the best hummus, organic hummus you will get to taste ever in your life. And she makes these beautiful hummus dips at home. And she's a very hardworking homemaker who has turned into an entrepreneur. And she makes these very small order, organic, homemade hummus. Right now, I have, I think, the spinach and the sun-dried tomatoes hummus with me here. And she sent a lovely note. She says, for all of us at India Voice Fest, for people who do so much to give identity to voice professionals. So thank you, Rakhi. And let's see if we can get Rakhi once again. Rakhi, see if you can unmute yourself. Am I audible now? Yeah. Okay. For some reason, okay. Just one minute. Okay. I think now. Okay, I got it now. Rakhi, I can hear you. Can you hear me? Yes, I can. Lovely. Hi, Rakhi. Thank you for joining us. I was telling people about Hummus by Rakhi. And why don't you tell us about your journey, Rakhi? This, everyone, is Hummus by Rakhi. And you can also see her number in the logo. And she's based out of Mumbai. And she's a dear friend. And if any of you enjoy hummus or these dips, this possibly is the best one you will taste in your entire life. So, Rakhi, please अपने बारे में बताइए और बताइए कब से आप ये कर रही हैं. First of all, thank you so much for your lovely words, Darpan. And I started this venture after COVID, like when the COVID was going on 3 years back. And this was something which just started. I always had a passion for, food, good food, basically. And then somehow started with different dips and eventually
I realized that everyone was like, the hummus you make is something very different. So by support of all the friends and all, started venturing into more. Jitna detail samjha, it is like the hummus is the amazing dip, very very healthy. Worldwide, जिस तरह का you have the passion for hummus, it's very, I was never aware about it, but then Absolutely, absolutely, Rakhi. And till the time we tasted hummus made by you, I think even we were not such big fans of hummus. And what is amazing is that you make small lots and you're not an industrial producer and you keep it organic. I would like to believe you do not add chemicals at all. No preservatives, I mean. No. This hummus will not stay more than 5 to 6 days. That itself is a testimony that there is no preservatives used in this. Because the moment you use something, we get so many products, hummus, which say ki use in 15 days, 1 month. How is it possible? How is it possible? Absolutely. Absolutely, Rakhi. And on multiple occasions, we have enjoyed the hummus sent by you. And we are happy that at India Voice Fest, whatever little platform that we have, we are able to showcase what we are calling friends with brands. So there are other such friends who run these small brands and who are doing great work. And we are going to showcase them also in the next few days. But I'm so happy you joined in today. And everyone, we are going to play the promo once again in just a bit. So please make a note of the number that is mentioned. And any of you, if you are a fan of hummus or any of these dips, you know where to call and you know where to order. Do you deliver only in Mumbai, Rakhi, or do you deliver outside as well? No, right now only in Mumbai because of the perishability of the product. It is not possible. Yeah, I understand, and I wanted you to say that because that also proves that you're keeping it very organic, you're keeping it very genuine, you're keeping it very healthy. So we have, all of us at India Voice Fest, have enjoyed the hummus sent by you this evening, and हमने उसको पूरी तरह से we have lapped it up, wrapped it up, और हिंदी में कहूँ तो उंगलियां चाट चाट के हमने खाया है आज शाम को. And thank you so much for joining, Rakhi, and I think we will also see you at the grand finale. So if there are people who are interested in the hummus that you make, I'm sure they can connect with you there as well. Absolutely. Thank you so much. Thank you for, calling me online. It was such a great pleasure to be here. Always a delight, Rakhi. Thank you so much, and I'll see you soon. Bye-bye. Yeah, bye. Thank you. Hummus by Rakhi, a beautiful homegrown brand, which we at India Voice Fest, like I said, this year, there is no commercial interest, there is no interest. The only interest is that we are happy to support people from the industry or outside who are running small homegrown brands. And all we ask is, we ask you to tell us about your brand. And in fact, people who are watching, if any of you have a small homegrown brand, not something which is completely commercial, not something which is industrial, please let us know. If possible, we will feature you in the coming days on India Voice Fest under this segment that we have, which is called We're Happy to Support Friends with Brands. So let's play that little thing again. Please note the number of hummus by Rakhi. हाय एवरीवन, कल हमने एक बड़े अच्छे काज की शुरुआत की थी जिसका नाम है वॉइस फॉर अ कॉज. अगर आप में से कुछ लोग कल शाम को जुड़े थे तो आपको पता होगा कि लीडिंग वॉइस आर्टिस्ट संकेत म्हात्रे का ये इनिशिएटिव है, उनका आइडिया है, और हम इंडिया वॉइस फेस्ट में इस आइडिया को पूरे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं. सो इस काज या इस इनिशिएटिव के जरिए, जिसका नाम है वॉइस फॉर अ कॉज, वी आर रेजिंग फंड्स फॉर अ स्कूल in probably the highest residential school in the world, the highest
फ्री रेजिडेंशियल स्कूल इन द वर्ल्ड। और ये जो हम छोटा सा आपके सामने वीडियो प्ले करेंगे उसके बाद आपको इस इनिशिएटिव के बारे में ज्यादा पता चलेगा। बट इन अ नटशेल एक QR कोड आपके सामने आएगा और 2 तरह की डोनेशंस आप डायरेक्टली स्कूल को दे सकते हैं, या तो 500 रुपीज या 5000 रुपीज। अगर आप 500 रुपीज एक सिंगल पर्सन डोनेट करता है डायरेक्टली स्कूल को, जो QR कोड है वो स्कूल का है, तो आपका नाम इंडिया वॉइस फेस्ट के ग्रैंड फिनाले में लिया जाएगा। और अगर आप 5000 रुपए इस स्कूल को डोनेट करते हैं तो आपको इंडिया वॉइस फेस्ट की तरफ से एक डायमंड पास मिलेगा, और उसके साथ ही ग्रैंड फिनाले के दौरान इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज वॉइस आर्टिस्ट के साथ स्टेज पर आपको फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा, उनका साइन किया हुआ एक पोस्टर मिलेगा और इंडिया वॉइस फेस्ट की तरफ से एक छोटा सा तोहफा मिलेगा। तो ये जो है ये एक बहुत ही क्लियर कट इनिशिएटिव है, जहां पर एक शख्स या तो 500 रुपए या 5000 रुपए डोनेट करे। तो ये नहीं कि 10 लोग मिलके डोनेट कर रहे हैं और वो नहीं गिना जाएगा। बिल्कुल आप करिए, आपकी मर्जी है, आप शौक से करिए, आप जितना चाहे डोनेट करिए उस स्कूल को, क्योंकि एक अच्छा काम है। पर अगर इंडिया वॉइस फेस्ट का जो ये इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत 500 रुपए अगर आप डोनेट करते हैं तो हम आपका नाम स्टेज पर लेंगे, और 5000 रुपए अगर एक शख्स डोनेट करता है तो उस शख्स को स्टेज पर बुलाया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा, और सारे आर्टिस्ट मिलकर उन्हें एक साइन करके एक पोस्टर देंगे और उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे और एक डायमंड पास। तो अगर आपके पास ऑलरेडी डायमंड पास है, अगर आप ऑलरेडी आ रहे हैं इवेंट के लिए, आपने एक डायमंड पास ले लिया है, तो क्यों ना आप स्कूल को 5000 रुपए डोनेट कर दें, और आप चाहें तो हम आपको एक और डायमंड पास दे देंगे। आप किसी और दोस्त को ले आइए और हम आपको स्टेज पर बुलाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छा काम है। अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन को फ्री में यहाँ पर एजुकेशन मिलता है इस स्कूल में, और इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, इससे ज्यादा संकेत आपसे कहेंगे। और हम जो है ये एक छोटा सा वीडियो प्ले कर रहे हैं, देखिए आप। Planet Spitty Foundation, initiated by former journalist Portia Putatunda, embarked on an extraordinary journey from offering free tuitions under a tree in Kaza between the years 2020 to 2022 to establishing a self-funded free boarding English medium school in Komek, the world's highest village at 15,500 feet in Spiti Valley of the Indian Himalayas. Enduring severe climatic challenges, Komek remains covered in snow for 6 to 7 months, with sub-zero temperatures year-round. Portia's determination, fueled by personal savings, laid the foundation for this challenging venture. Starting with 40 children under the open sky, the foundation's journey evolved into a 6-room school building, defying the extreme Himalayan conditions. Today, this school not only educates but also shelters 10 underprivileged children, offering them a chance to escape the cycle of poverty and illiteracy. In a place where carrying water uphill for kilometers is a daily reality, Planet Spitty Foundation stands as a beacon of hope. It testifies to the indomitable human spirit and proves that positive change can thrive even in the most challenging environments. India Voice Fest is proud to partner with Portia and Planet Spitty Foundation towards a better future for these wonderful children.
Good evening, everyone, and welcome to India Voice Fest 2023. India Voice Fest is India's biggest voiceover and dubbing conference and awards platform. And this year, we are celebrating 6 years of this historic platform. India Voice Fest 2023 is conceived and curated by yours truly, produced and organized by Sugar Mediaz. Our main sponsor, our Sound and Vision Studios, our associate sponsor, our Audio Magic, our industry partners, our MnM Talkies, G-Corp Media, Gulmohar Media, and Aural Arts. Our proud supporters are Surabhi, Javeri, Vyas, Neshma Academy of Acting and Voice Acting, KRG Kreative Studio, and Skylink Freight and Forwarders Private Limited. Everyone, it is almost 8 p.m. on Friday, the 8th of December, and we are about to begin possibly one of the most awaited sessions at India Voice Fest. In fact, this session, this topic is possibly one of the most spoken about topic in a long, long time for the voiceover and dubbing industry. And we are very, very fortunate to have someone who is a very critical stakeholder of this segment that is coming up now, that has become a part of our world, which is these two words, artificial intelligence. So we have this session called Artificial Intelligence. Is it an enabler or a disruptor for the voiceover and dubbing industry? In just a moment, we will be back with our guests. Ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome me please join me. क्या बोल रहा हूं मैं? Please join me in welcoming our very distinguished speaker today, who is Mandar Natikar, the co-founder and CEO of Neural Garage. Before I get Mandar on screen, let me tell you a bit about Mandar. Mandar has spent more than 20 years in the media and entertainment industry, having held leadership roles in organizations like Viacom 18, Times Television Network, Reliance Entertainment, Sony Entertainment, and having led and built brands like MTV, Movies Now, HBO, Kidzania, BigAdda.com, to name a few. After more than 2 decades of being a corporate guy, he co-founded a company called Neural Garage with his co-founders who are alumni of IIT Kanpur. Neural Garage is a generative AI startup and has built Visual Dub, its proprietary tech that is changing the way dubbed content is distributed and viewed. Please join me in welcoming Mandar Natikar. Thanks. Mandar, thank you for joining us. Thank you so much. It's extremely nice to be a part of your day today, and thank you for the warm welcome. Thank you, Mandar, and thank you. I was mentioning yesterday to one of my friends and colleagues that it is very courageous of Mandar to accept our invite to join in for a session at a voiceover and dubbing industry conference. So, we, Mandar, today, 2 of my very dear friends who are literally stalwarts of the voiceover and dubbing industry of India have again generously consented to join us in this discussion. And I'm going to get them on the stream. Let me first welcome Mona Shetty, who is the president of Sound and Vision Studios. Mandar, Mona, as you might know, Mona is an absolute pioneer of the voice acting industry in India. She runs Sound and Vision Studios, which is one of India's leading localization content companies. And I have with me another very dear friend and an absolute stalwart of the industry, Rajeshri Sharma from Audio Magic. Hello. Hello, hi. Hi. Rajeshri is again a veteran. She has been a voice artist all her life from a very early age, and today she heads Audio Magic along with Tarun Sharma, who also happens to be her husband. They run Audio Magic, which is one of the leading content localization companies again, and they work with both Mona and Rajeshri in their respective roles. They work with some of the biggest names in the voiceover and dubbing space, and I'm very happy to have them join me.
because it is, as all of us know, these two words are defining our everyday conversations. All of us who are first voice artists and then entrepreneurs, all of us are rattled in more ways than one by these two words. And I was telling them that it is very courageous of Mandar to face the onslaught of the voiceover and dubbing industry. So I'm looking forward to a very insightful, educating session today. And I'm going to first ask Mandar. Mandar, why don't, before I move on to asking my colleagues to grill you or to ask you questions, I'm going to ask you, Mandar, why don't you tell us a little about Neural Garage and what do you do at Neural Garage? So actually, I'm very happy to be a part of this. For the hey, the split screen went away. That's Yeah, we'll get it back. Let's get it back. Yeah. Yeah. It's I think it's easier to speak when you can look at the people who are I part know. of. So basically, see what happens is all of us, thanks to the last 3-4 years of streaming platforms, all of us love to consume content and content in every form. And what we have also realized today is that localization of content has become the currency of commerce for the entire industry. I mean, if you want to really monetize your IPs to a larger world, then there is no better option than to localize it. But what happens is when you localize content, you sacrifice authenticity, right? For example, when you watch a Korean movie in English, you're sacrificing authenticity because your audio is English, but your visual still remains Korean, right? And that is something that humans can't fix. So let me get to what we are solving as a problem. We are solving as a problem that human beings can't fix, which is getting actors to speak in targeted audio languages. And that is where technology can actually play a very big supportive role in bridging the gap between what humans can do and then what technology can enhance. So that is what our proprietary technology Visual Dub does. Basically, it syncs the audio and visual cues in dubbed content for the viewer to have a completely seamless, relatable experience. Okay. Okay, so okay, we got an idea. We got an idea about this. That what you're saying is that what your proprietary tech does is it plays a supportive role. And I guess one question that all of us have, and I'm sure Mona and Rajeshri will elaborate on that much more, is will your technology? Let me just address the elephant in the room. Will your technology replace voice actors? Actually, it will not. It will, like I said, it's a supportive technology for the entire dubbing and voice ecosystem. Let's take an example. Let us say Pathan has got dubbed in Japanese. Now, whatever you do, you cannot make Mr. Shah Rukh Khan speak in Japanese, or you can't make Mr. Tom Cruise speak in Tamil, right? You can only Yeah, make I'm them. glad. I'm glad you didn't say this about Salman Khan because Bhai can do anything. Bhai can do anything. I mean, that's different. So our technology will only aid that. So it actually for the entire dubbing and voiceover industry, technologies like ours will only help to help them enhance their own suite of offerings to the entertainment industry. Oh, splendid, splendid, great. Mandar, I'm going to now request Mona. Mona, why don't you join in and why don't you put in your question to Mandar? So I want to understand Mandar, and nice of you to be here. I was asking Darpan, is this going to be a roast? He said, no, we shouldn't roast. No, He's agreed to come here. So, the voice of obviously the voice actors, the voice industry is very concerned about AI and what it could mean for them. So, they have some very, very valid concerns because a lot of people have been asked
to record their voice for a certain period of time for machine learning, right? So sometimes people didn't know what it was being recorded for, right? Sometimes Sure. the people requesting the work to be done via many third Layers. parties, they don't make it very clear, right, what the voice is being recorded for. So sometimes, so the voices feel cheated in some way, that there was no transparency, there was no clarity, what and where this will be used, how it will be used, what will it be used for, what period of time will it be used for, and am I getting adequately compensated? Am I giving away my voice to somebody who could misuse it or overuse it beyond the permission I have given? So these are the concerns, of course, of voice actors, which all of us are now, especially the Association of Voice Artists, is actively trying to address and give out guidelines that, these are the questions you have to ask. Since this is your concern, you have to ask very actively that, where is this going to be used? How is it going to be used? But that aside, what I want to understand from you is what visual dub really does. So, are you saying you're going to do voice morphing and video morphing? So let me explain what visual dub does. I think that's Yeah. a Can good you start. break down the workflow for Yes. us and the process a little bit? Absolutely. So Yeah. let's assume for a moment that there is a Korean film that has been dubbed in Hindi, right? So what happens is the audio. So if I am a viewer, I am listening to the film in Hindi, but the actor's lips are still moving in the Korean dialect because that's how it has been shot. So what visual dub does is takes the video as an input, it takes the audio of the dubbing as another input, and it completely transforms the visual to match the audio. And that is the secret algorithm that we've built, which comes from hours and hours of training on data. So just to go a little further, let me explain to you what happens. A human voice, the lowest bit is called phoneme. You would have heard, I mean, being in the sound industry, you would have heard about phonemes, right? Every phoneme has a corresponding viseme, which is a lip shape, You're right. and which is universal across ethnicity, language, culture, geography. So, for example, if I have to say ma or mother or mehbooba or Madrid, at more my lips have to close. And at almighty or Abdullah or amazing or America, my lips have to open. So, our algorithm has learned the unique mapping between the phonemes and visemes. So, what it does is it then bases sound as a controller, it accurately predicts what could be the corresponding lip shape and then transforms the video to match that. So now you will see when so for example, let us say now we have Pathan dubbed in Japanese. You will now see Mr. Shah Rukh Khan actually looking like he's speaking in Japanese because we've run it through visual dub. But the voice will not be his, it will be that of the voice actor. The voice actor, absolutely. And we all of Oh, us know that sometimes it's a character voice, sometimes it's a celebrity voice. So we actually do nothing to the voice. right. So you're not altering the recordings as such. You're only No, doing the video morphing. we will, Yeah. yes. Yeah. So and it all depends on, for example, right now we have not opened our technology for consumers. We are working only very directly with clients. So all permissions are taken by the clients who represent the brands or so for example, we did some work for Amazon Pay, in which Ayushman Khurrana was the actor. You would have seen the commercials, right? Amazon Yes. Pay. Now they were dubbed in 5 languages: Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Bengali, Marathi, 6 languages. So we received the video. We also received the audio files of the dubs, which were recorded by the voice artists in those languages. We just made it look like Ayushman Khurrana was speaking in Tamil. We did Right. nothing to the voice. Right. Right. So that's why I began with saying that technology like ours is actually an enabler to the voice and the dubbing industry to add an additional element to their own offering and suite, because this is something that human beings cannot achieve, which is Right. perfect visual sync in every language. Yeah. I Have mean, I that's have I very explained true. Fair. myself?
Yes, absolutely. Absolutely. I think Having said that, I think it's quite clear. Yeah, quite clear that what you are doing is you are working on the video in terms of, like Mona said earlier, morphing the video. If I use that as a layman term, morphing the video to fit into the audio. So we are not talking about using an artificially generated voice. You work with human voices, but you work on the video. But Yes. that's a relief. That's a relief. So No, but I must that's add one thing. one more part to it. One more part to it. Now, what could also happen is, for example, and let me be honest about it, that now, for example, we'll stick to the Pathan example of Mr. Shah Rukh Khan in Japanese, right? So, some Japanese voiceover artist has dubbed for Mr. Khan's lines, but he will never sound like Mr. Khan. I was just So, coming to that. so technology can help improving the Morph the quality of that voice. It's called voice cloning. voice It's clone. actually called voice cloning. It can help clone that voice to sound like Mr. Khan. Well, more it'll authentic. clone Okay. it'll clone Mr. Khan's voice and then morph the actor's voice into Mr. Khan's voice, right? Into the dubbing artist voice. No. See the No, it'll morph the dubbing artist's voice voice for, into Mr. for Khan's it to voice. sound like Mr. Yes. Khan's voice. Yes. Okay. Yes. But again, the underlying thing here for us is that it is still dubbed by a human voice, and it Yes. is the human voice that is cloned to sound like Mr. Khan's voice. Absolutely. I But get this that. I is get that. You So, still need human beings to do the first process, right? It is technology is mhm. only enabling the additional part. right. Yeah. Okay, Well, fair, we've also been lovely. seeing Yeah. examples. Mhm. We've also been seeing examples of machine translation and Yeah. generation of the dub from cloning the voice and from machine translation. And then there is somebody who just tweaks all of that for it to sound, fluid and colloquial and all of that. See, Mona, So what happens is, like you might have seen it in there, cases which make it viral videos on mobile phones and stuff, right? I'll tell you a real case. Okay, this is the funny part. So I will not take names, but with the permission of the group, I will share the anecdote, and it might have a little different language, but to explain, let me go through it. So there's a very large business figure who was speaking on YouTube about their experiences with other business leaders, and it was an interview format, and they wanted us to visual. So they said, we will give you the dub. We want you to make it look as if that business leader is speaking in those many languages. I said, great. So they got it translated through the translation softwares, and then somebody got it dubbed. Now look what happens. The In the original video, the person said, on this point I want to open up more. I want you to open up more on this point. Hindi translation made it sound like really weird. Open up became kholna. So I will not say anything more. The I the get that. dubbing software did a literal dub of that, and it came to us. Thankfully, we were checking it, right? yeah. So we caught it saying, boss, this is not in line with the context. So what happens is, even though there is technology, but you still need human beings to check for colloquialness, to check for standardization, and to also check for whether it is rightly transferring the message and not just literating it. That's true, but what's happened here now is you have generated the voice of the original person via AI to speak another language. So you have Uh, you have eliminated the need for a voice actor to come and dub that. no, this was dubbed. This was dubbed. This was dubbed. This was not. This was not. It was the translate. The translation happened through technology, but the dubbing happened through a real person. Yes, so the concern really is here that the generated voices, either synthetic voices or cloned voices, whichever it is, will actually be used now with machine translation and with people like you and me sitting there just making those corrections as we go along for translation, for fluidity, colloquialism, all of that.
for expressions to be conveyed correctly, etc. And there will be no need for a voice actor. So that is the concern. Look, I wouldn't go that far out because from what you're saying to what it is now, there is still a lot of traversing to happen before the expertise of a human being can be replaced by a machine. And to be honest, we work with a lot of partners, right? We work with partners who create this voice and translation. And to be honest, it cannot even be used in advertising. Forget films or streaming platform, because that sounds very robotic. It doesn't sound human. So it's great for presentations, it's great for small video snippets, but even a normal advertising produced by Ogilvy for a Unilever, which is a 35-40 second ad, even there you can't use it. It's just too robotic. So what you're saying, Mandar, is for the low level, for the low hanging fruits, as we call it, for small snippets or for small audio visuals or for small narrations where there is not a lot of intonation or emotions involved. That is where the generative voice right now is being used. But when it comes to real instances like people talking or emoting, you're saying we are still a little away from that, but how far? Oh, very far. See, you can use this for, say, let's say it's one line. Then you can see what happens is technology cannot carry emotion. So अगर 3-4 words हैं तो technology can replace it, but it's a dialogue or a scene, then we are far from it. It will take a lot of time and lot of complexity. I mean, the machine learning has to cross like many challenges to get there to make it sound like human. But at the Mandar, same Fair. time, we will not need so many actors to do the work. I can do the entire film, and you can clone all the actors' voices and put them there from the original, right? I mean, that really is the future, but it's far away. That But is what is you're this doing, for right? other softwares available in the market, Mandar? Since you're the expert in the field, is this true of everything that is available today in the market? Like, what do you mean? I mean, आप can you जैसी elaborate? दूसरी companies. Look, the technology that we've built, there is one more technology, one more company in the world. You could check out flawless.ai. They are the only company that Flawless.ai. comes very close to what we are also. So, for example, our technology can be used across long formats to small formats, which is films to OTT to advertising to 2-3 words. And flawless.ai is the closest company that comes to that count. But there are many technological startups that do text replacement also. Text So Fair, replacement. yeah. fair. So I think sorry, go on that. Sorry. Please complete. Yeah, please. I mean, if I have some time, I can explain to you the overall ecosystem. If I have like 2 minutes to. Please. No, please take your time. We have all the time. In fact, this is very important You're and on the hot take more than seat, 2 Mandar. minutes. You are on the hot seat, absolutely. So there are a lot of startups who use something called as text to audio. Basically, if you give a line of text, that can get converted into audio. But uska limitation ye hai, it sounds robotic. It doesn't sound completely human. So whilst it can solve for one ekhad line somewhere, it cannot do the work that a voiceover artist can do, which is bring emotion, inflection, character, humor, and the personality of the actor into the context. Then there is technology like ours, which I call an enabler technology to the entire dubbing and voiceover industry, because we bring to the table, which is what I call the last mile of connectivity, which is where a human job truly ends and then technology comes in. So in this kind of zone, there is flawless.ai, which is in the visible space, but I don't know if there's anybody else.
who can do this. I mean, at a later time, I'm happy to share some of our work samples that and our demos, which you can take a look at that. And since you guys are from the industry, you'll understand what this technology achieves. Hmm. Absolutely. Can we do that? Can we do that today, Mandar? I mean, would you have access to? Can you do that? I can. Do you want me to do it right now? We can. What do you say, Mona Rajshri? I think it would be Absolutely. very. Just It would be very What I'll interesting. do is there is this one current thing that we are doing. I'll just share it with who's that lady? Sure, sure. You could share it with Mamta, I'm sharing it with and her she. right now. Sure, sure. sharing She it can with her. she can give it to the studio right away, and we can play that out. But my request is that don't share it with the ecosystem because it is still work under course. progress. And No, absolutely. I request you to watch it on your own browser because sharing on screen will bring a lag into it. So I will send it to you, watch it on your browser, Okay. and we can. It's in her inbox right away. It's in her inbox. Okay. She'll have a look at it, and we'll get that. So yeah, splendid. So Mandar, I think what all of us as an industry are grappling with. I think right now we are in a very ambiguous space where there is a lot of ambiguity in terms of lack of clarity about what is happening in terms of generated voices, in terms of AI generated voices. While what you're talking about sounds like a relief to us because you're saying you start your work where the human voice work ends, but we are also surrounded with innumerable instances all around us where, like Mona was referring to, where generated voices are being used and there is rampant, there is hardly any regulation. So I'm just asking you, as someone from the tech side of the industry, how is your ecosystem working around it? Because there are no contracts, there is no regulation. Today, anyone, if they want to, they can very easily clone my voice because there is tons of data about my voice available on the internet. And what will stop them from generating my voice as a voiceover artist? And how do you? We are a little in the dark woods right now, and some clarity would really help us, Mandar. Look, I'll try to answer this the best I can. We have seen two instances of very recognized voices already being IP'd. One of Mr. Bachchan and one of Mr. Anil Kapoor. Yes. Yeah. So what they have actually, and it's a landmark judgment because they have gone to courts and they have IP'd the quality, baritone, the texture, the inflections, everything to do with their voice. So, for example, if I want to create an ad tomorrow, I cannot use a voice that sounds like Mr. Anil Kapoor and get away with it. I mean, in all honesty, if they decided to sue, people will get sued. So and the industry evolves, right? For example, so when we did some work for Amazon in May, with Manoj Bajpayee, G was the actor in that campaign. At that point of time, visual dub just happened. But when the same campaign came in August with Ayushman Khurrana, there were permissions taken from Yashraj that there will be AI used. So what is happening is the industry is getting evolved and they are also learning. So all of these contracts are now coming into play. Today, I know actors when they sign up contracts with studios or with agencies, they include that my voice cannot be replicated without my permission, or my visual image cannot be changed without my permission, and so on and so forth. So the industry will evolve. See, one thing we have to understand is that one can really not stop the advent of technology, whether we like it or not. Absolutely. So, That's true. Absolutely. I mean, that is here to stay. I mean, and this technology is moving at such a rapid pace that we have to come to terms with it and see how we can benefit out of it. Yes. And we also have to become smarter. So, for example, if Darrpan Mehta is a very, very established
reputed, known voice in the industry, then Mr. Darpan Mehta has to do everything possible in his means to safeguard the right to his voice. Yeah. yes. Mhm. I mean, how to do it? I'm not the right person, but Yeah. maybe you could talk to people about what needs Yeah, to be we done. already are. Thankfully, our association, the Association of Voice Artists, has been very, very active, has been very aggressively working on a war footing around this. In fact, since we're talking about contracts, I do understand that. But again, the flip side is while a Mr. Bachchan or Mr. Anil Kapoor or these big producers, these big brands, they can afford to have to fight for to secure the IP to their voice. Unfortunately, a major segment of the industry does not have access to those resources, and the legal framework in our country when it comes to intellectual property, especially of something like your voice, is still literally the understanding of that is next to none. So that is a fight that we will have to fight on our own. But yes, it's nice to know from you that this is what is happening in the real world out there. But at least we are questioning now, Darpan. We are trying to understand. Everyone is paying attention. People are talking about this. Yeah. So for the longest time, I've seen this as a threat. A threat also because it makes you come out of your comfort zone. Things are going on in a particular way, and you're very happy with the things moving. You're in the best phase of the industry, etc., etc. With streaming platforms coming in, a lot of dubbing happening. But then suddenly there's AI, so you need to get out of your comfort zone and think, कि अब क्या करें? अब कुछ और हो सकता है. You could be replaced, or you have to work with this new technology, adapt new ways of kind of working with AI. So it makes you come out of your comfort zone. So everyone's listening now, they're asking questions. That's what we've been speaking at these conferences about. At least know what is happening, educate yourselves and ask the right questions. So that is something, yes, which all of us need to do as responsible voice actors. Absolutely. Absolutely. I don't know if it is the right analogy, but when music CDs came in, cassettes, cassettes had to go. The cassettes were dead when music CDs came in. But then music consumption or music creation never stopped. So I don't know if is that even an analogy in our case? Who are we? Are we music? Are voice artists music? That maybe the technology will evolve and I mean, for us, the major concern is will human talent, and I think I'm seeing all these comments on YouTube and Facebook, and we've also got a lot of questions on a Google form that we had put out because today's session we felt that would generate a lot of interest. So we've a lot of voice artists. I think most of them. I'm not taking names because ज़्यादातर के सवाल यही हैं कि can AI generated voices have someone is saying Pallavi Chawla is asking can AI generated voice have depth or connection to the character. Then some people are asking about contracts and about how legal is it to just clone a voice. So it is quite a muddled space right now. And while what you're saying, Mandar, is helping us, but at the same time, I think the challenges that lie ahead of us. So let me ask you one thing, Mandar. You're saying that we are still far away far, far away from a time when human voices will be replaced. Is that as a tech developer, you are somebody who has developed a proprietary technology. You're talking about if you can do something with video, I'm sure you can do something with the voice as well. So it is your choice that you're not doing it. But the point is that an ethical question, or is that a matter of regulation? You think the government has been very slow in terms of understanding that because there is no regulation right now. There's no regulation when it comes to AI in the country. हमारा तो number पता नहीं कब आएगा. नहीं, Even but हो रहा है. So let me interrupt We are here. definitely taking it Please. There's a body called NASCOM. Have you heard of it? Of So course. NASCOM has actually set up a generative AI foundry. Okay. We are a part of it to work very closely with the government on policies and regulations and many other things. So there is work definitely going on because look, the biggest risk is
at the extreme end is, say, a very influential global leader, and somebody uses technology to clone voice and video, and say something goes out, right? It can cause a chaos. Yes. So there is work going on, let me assure you, and there is something called as responsible AI. So companies like us, for example, at the cost of a lot of things, we will not put our technology out in the hands of consumers. We work directly with clients and with partners. So, for example, say tomorrow, Visual Dub could get into a partnership with Rajashri and with Mona. But if some layman comes to me and says, "I want to use our technology," we get on our wait list. We have more than 5,000 people who want to use our technology. But we have clearly said that we have filtered that by ID. So if somebody has sent us a Gmail ID request, then automatically Okay. you're out. Only if you represent a formal, reputed organization, only then we'll work with you. That too with on a project based right now. So everybody is kind of has a certain level of responsibility. But I must also tell you, check out these companies called Respeecher or 11 Labs. Of course, Yes. 11 Labs. You 11 have heard of Labs. I think for a lot of people in the voiceover industry, 11 Labs is the matter of contention for all of us. But even Respeecher, even even Respeecher, Respeecher, yeah, I'm not aware about. But 11 Labs, absolutely. So we yeah. will check that out. So they are really, they are the guys who could potentially disrupt uh, voice as an industry. So, So coming to this point, that about disrupting. Now, in your world, how do you look upon the moral rights of the actors or the voice actors whose faces you're morphing or whose voices you're morphing? with Um, with, with permission. Only So with nothing. express permission for a Yeah, particular product, right? absolutely, absolutely. When for example, when we did work for Amazon Pay, we had explicit permission. Amazon is a big client, right? They took permission from Yashraj Films that represents Ayushmann Khurrana. So, we did some work for Coca-Cola right now on the ICC World Cup with Harsha Bhogle. So, Harsha Bhogle's team was completely involved, and they approved everything that was being created or said. So when you work with formal entities, They will not permissions are misuse the no, content. no, no, and very clearly, see, every company And like also the ours. technology. Also, the Yes, technology won't be misused. absolutely. So, Mona, what happens is when we get into a contract with a client, for example, uh, in our contract, it clearly says that we are indemnified against any permissions or artist permissions which we assume that you've explicitly Informed. taken. Yes. So when you work with legit customers or legit clients or legit businesses, uh, see, I'll tell you something. 99% of the times, they don't want to find ways or navigate to cut corners or cut somebody's rights. Right? It is that chota sa percentage of fly by night operators who will do all of this to save some pennies here and there. But legit companies will never do. And moving on, they are also becoming more and more aware. So they are also very, very, I would say, lawyered up. Responsible But use of. some key takeaways here, which I would like to just reiterate for the benefit of a lot of our viewers who are writing in, especially किशोर जी has specifically written कि प्लीज आप लोग जरा हिंदी में बात कीजिए तो हम और समझें इस बारे में. तो आई थिंक सम की टेकअवेज मंदार जो आपने अभी बताया. पहली बात तो जाने माने कंपनीज के साथ काम करना है हमको, जिनके बारे में हम कुछ तो पता कर सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनके पास. उनकी जो एंटिटी है, इट्स अ रिकग्नाइज्ड एंटिटी, इट्स अ रजिस्टर्ड एंटिटी. ओके. Correct. दूसरी बात, आपको पेपर वर्क चेक करना है, आपको देखना है कि परमिशंस किस तरह के लिए जा रहे हैं आपसे.
और Correct. तीसरी बात, आपको ये देखना है कि जो काम आपको दिया जा रहा है, आपके परमिशन सिर्फ उसी काम के लिए लिए जा रहे हैं, राइट? तो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर आई थिंक मोना, बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक एक जो सबसे अहम बात मेरे ख्याल से इस डिस्कशन की यही है, जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ट्रूथ है हम सबके लिए, वो है जैसा राशि ने कहा कि अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। तो हम जो है अब हम हमारे जितने कलाकार हैं, अब वो टाइम गया जब आप कह सकते हैं कि मैं तो कलाकार हूं, मुझे माइक के सामने रिकॉर्डिंग करनी आती है, बाकी मुझे कुछ नहीं आता। अब वो टाइम चला गया जब आप ये मैं हाँ, आपको जब ये एग्जाम्पल कहकर निकल पाएंगे। हाँ जी, दर्पण, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सर। एंड अगेन एक एनेक्डोट है, तो मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा कंग्लोमरेट, उनको कुछ काम चाहिए था ऑन सम देयर एनुअल एनिवर्सरी, और जो हमारी इंडिया के सबसे बड़े जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है 2-3, उनको ये कंग्लोमरेट रिक्वेस्ट करता रहा, थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़ा टाइम निकालिए, वो उन्होंने टाइम निकाला ही नहीं। और जब एकदम डेस्परेशन में उन्होंने ऐसा प्राइस दे दिया उनको कि वो 5 गुना उनका स्टैंडर्ड प्राइस था। और ये जो कंग्लोमरेट की बात कर रहा हूं, ये बहुत मतलब इंडिया के टॉप 3 कंग्लोमरेट्स में है ये। तो वो जब टाइम आया तो उन्होंने बोला ठीक है यार, ये काम हमको करना ही है हमको इधर से, आई डोंट नो इतना क्यों, जबकि उनके पास काम था। और पैरेलली होता क्या, आज सोशल मीडिया से एवरीबडी इज अवेयर, राइट? तो वो देख रहे थे कि ये तो whoever that पर्सन वाज, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ट्वीट जा रहे हैं, फेसबुक पे अपडेट जा रहे हैं, पर 1 घंटे का टाइम नहीं था टू कम एंड रिकॉर्ड 3 सेंटेंसेस। तो फिर उन्होंने वो काम एआई के थ्रू कर लिया और वो ठीक ठाक रहा, मतलब उनका काम चल गया। अब वो मेरा तो नहीं था, बट आई वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, आई वॉज वन स्मॉल पार्ट इन देयर ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स। तो तभी उन्होंने ऐसे क्लियरली बताया कि बॉस ये 3 साल में फिक्स हो जाएगा। ऐसा एटीट्यूड चलता रहा तो 3 साल में कोई फोन नहीं करेगा। तो आई एम जस्ट सेइंग दैट लुक, दिस इज अ रियल एनेक्डोट दैट हैपेंड with a very large conglomerate and with very very big voice over artists। मतलब वो बहुत, मतलब इंडिया के टॉप 3-4 में आते हैं वो। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी विल फाइंड अ वे हर जगह पे। तो अगर हम काम करना चाहते हैं और हम अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते हैं, तो हमको इसको एम्ब्रेस करके, इससे सीख के हमारा स्किल और बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। राशि आप एक बात बताइए राशि के, आई एम श्योर हमने भी इस बारे में बात की है पिछली बार, जब हमारी जो एसोसिएशन है उन्होंने भी, वो भी बहुत भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इसको लेकर लोगों को जागरूक करें, हमारे मेंबर्स को, और उन्हें एजुकेट करें और उन्हें इस बात की अहमियत समझाएं कि अब वो वक्त आ गया है कि आपको कागज पत्तर को भी समझना पड़ेगा, जैसा हम कहते हैं। अब सिर्फ माइक नहीं, आपको कागजों को भी समझना पड़ेगा। और मुझे याद है राजश्री, हम बात कर रहे थे पिछली बार, एक बार कभी हम यही बात कर रहे थे कि अब वो वक्त आ गया है कि अब आपको अपस्किल करना पड़ेगा। अब आपको रेलेवेंट रहने के लिए आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अब आराम से बैठने वाला वक्त नहीं है। राशि, आपके पास, आप इतना काम करते हो, आई एम श्योर आपके पास भी इस तरह के एआई जनरेटेड वॉइसेस को लेकर रिक्वेस्ट आती होंगी क्लाइंट से। तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए ना, तो मे बी वी कुड लर्न फ्रॉम दैट, वी कुड गेट समथिंग फ्रॉम दैट। बात ये है कि लोग अभी जो सुन रहे हैं हमें, या जो इस मुहिम से जुड़े भी हैं, वो ये सोच रहे होंगे अरे वॉइस इंडस्ट्री तो खत्म होने वाली है। अब ये बातें सुन के उनको ये लग रहा होगा कि अब इट शट शॉप, बस अब आप कुछ सालों का, जैसे हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एसोसिएशन ऑफ वॉइस आर्टिस्ट में, उसमें मुझे याद है एक आर्टिस्ट ने खड़े होकर पूछा था, डॉक्टर साहब कितना वक्त है हमारे पास? तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बट ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब कितना वक्त है, वक्त ही वक्त है। No, that is the real question, ज्यादा नहीं है। So the thing is कि जैसा आपने कहा कि सही कलाकारों की हमेशा कद्र होगी, सही आवाजों की हमेशा कद्र होगी,
और अगर आपका जो स्किल है, आपका जो टैलेंट है, वो आप निखार सकें, अपने आप को हर फील्ड में मजबूत कर सकें, भाषा में, एक्सप्रेशन में, वॉइस में, अपने उतार चढ़ाव में, हर चीज में अगर आप खेल सकें और इसको अपनी जो कला है उसको और निखारते जा सकें, फिर आपको कोई हटा नहीं सकता, आपको जल्दी कोई बदल नहीं सकता। वक्त लगेगा, बहुत मुश्किल बना दीजिए आप इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको कॉपी करना बहुत मुश्किल हो जाए। जो आप कर सकते हैं, आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया भी तो एक इंसान नहीं है, तो उसको आप इतना मुश्किल बना दीजिए कि वो आपको कॉपी करने में उसे बहुत वक्त लगे। जैसे अगर हमारे पास में रिक्वेस्ट आती हैं, सभी प्रोड्यूसर्स के पास में अब आने लगी हैं रिक्वेस्ट, जो वो कहते हैं कि 1 या 2 आवाज़ों से या 3 आवाज़ों से आप इस प्रोग्राम को डब करा के हमें दे दीजिए और हम इस प्रोग्राम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इसको परिवर्तित करके अलग-अलग आवाज़ें बना के आपके सामने पेश करेंगे। तो हमारा कहना यही होता है कि अगर इसी तरफ हमारी दुनिया चल रही है, तो जिस काम में 17 या 20 आवाज़ें लगने वाली थीं, अब अगर उन आवाज़ों को इतना सीमित कर दिया गया है, दायरा इतना छोटा हो गया है कि 3 आवाज़ों में वो सिमट कर रह गया है, तो कम से कम उन 3 आवाज़ों का मुआवज़ा तो आप ढंग का दे दीजिए। एक मुआवज़ा उसका ठीक दे दीजिए, दूसरा आप ऐसे कागज़ पत्र तैयार रखिए जिससे ये हो कि इसी प्रोजेक्ट में आपकी आवाज़ यूज़ होगी। ये नहीं कि अगर मैंने या मोना ने हमने एक-एक कैरेक्टर डब कर दिया तो अब ये आवाज़ वहाँ पर निरंतर है एंड इस आवाज़ के साथ वो अलग-अलग प्रोग्राम्स को परिवर्तित करते चले जाएँ। दैट शुड नॉट बी द केस। ये होना चाहिए कि उसी प्रोग्राम के लिए ये सीमित रहे और आप ठीक से मुआवज़ा ले लें इस चीज़ का। अब इसमें भी पूछ उन्हीं कलाकारों की होगी जो 17 आवाज़ें करने लायक हैं, ये भी आप सोचिए। तो इसीलिए ज़ोर इस पर दिया जा रहा है कि आप अपनी कला को निखारिए, अपने आप को इतना अच्छा बनाइए कि हम ये भी कर सकें, हम ये भी कर सकें। आपको बदलना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो जैसे हमें ये भी सोचना होगा, आई थिंक राजश्री, जो हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी अपने यस, वॉइसेस के साथ, कि हाँ, आई मीन आवा अपनी तरफ से तो रिसर्च कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं आर्टिस्टों में, और लीगल हेल्प भी दे रहे हैं आर्टिस्टों को, गाइडेंस दे रहे हैं। लेकिन जो हमें याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि हमारा काम बंद हो जाएगा या हमें काम नहीं मिलेगा, हमें शायद दूसरी तरह का काम मिलेगा, है ना? बिल्कुल, यस। हमें थोड़ा-सा जैसे मंदार ने बताया, टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा, सीखना होगा कि टेक्नोलॉजी के साथ हम कैसे जुड़ें और इसको कैसे यूज़ करें हमारे फ़ायदे के लिए, और शायद इसके साथ खुद को भी इस तरह से प्रिपेयर करें कि टेक्नोलॉजी को भी हमारी ज़रूरत पड़े और बिल्कुल, पड़ती रहे। है ही, हमेशा है। बिल्कुल दोनों साथ-साथ चलें, आप टेक्नोलॉजी के साथ चलें, अपनी आवाज़ को लेकर, एआई को लेकर साथ चलें। तो लोग हमेशा, मुझे ये लगता है कि कई आर्टिस्ट पूछते हैं मेरी आवाज़ को वो कॉपी करेंगे। आपकी आवाज़ को कॉपी करने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर उनको कॉपी करना है तो हम डबिंग का काम कर रहे हैं, तो ओरिजिनल एक्टर की आवाज़ नहीं कॉपी करेंगे। आप वो क्यों कॉपी करेंगे? तो उनको चाहिए आपकी कला, वो कॉपी करना चाहते हैं आपकी कला। आप कैसे इस डायलॉग को बोलते हैं हिंदी में, कहाँ आप स्ट्रेस देते हैं, कौन से वर्ड पर आप ज़ोर देते हैं, कहाँ कम, किस पिच में कब आप ज़ोर से बोलते हैं, कब आप नीचे बोलते हैं, ये कॉपी करना है उन्हें, ना कि आपकी आवाज़ उतारनी है, उन्हें उतारना है आपका स्टाइल। तो स्टाइल को इस तरह से बनाइए कि कई आर्टिस्ट हैं, क्यों कुछ नाम बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि भई वो उनकी कला जो है वो उनका उनका यूएसपी है, यानी वो जिस तरह से एक रोल को निभा देते हैं, आपको मज़ा आ जाता है देख के कि हाँ, मतलब हिंदी में हमने ये सुना और हमें बहुत अच्छा लगा। तो हर आदमी वो नहीं कर सकता, तो आप वो बनने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप वो बनने की कोशिश कीजिए। या ये हमारे एब्सोल्युटली साथ कई बार हो चुका है। आई थिंक राजश्री, यू विल एग्री दैट लक्ष्य भटनागर ने लिखा है, इलॉन मस्क जस्ट लेफ्ट द चैट। I'm sorry, I couldn't help but react to that. But हमारे साथ में पहले बहुत हो चुका है, जब मैं एक्ट्रेसेस के लिए डब करती थी,
तो मुझे ये भी बताया जाता था कि हम फाइनल डबिंग इस एक्ट्रेस से कराएंगे, लेकिन उसके परफॉर्मेंस पे आप जरा एक गाइड ट्रैक बना दीजिए, फिर वो बिल्कुल, आपके यस। परफॉर्मेंस को देख के वो डब करेंगे, ताकि उनको इन्फ्लेक्शंस और परफॉर्मेंस उन्हीं के परफॉर्मेंस में समझ में आए कि उनको कैसे डिलीवर करना है। एंड आज की तारीख में उनको वो रीडअप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनका वॉइस क्लोन हो जाएगा और हमारी आवाज पे उनका वॉइस मॉर्फ हो जाएगा, राइट? सो बिल्कुल, वो बदल देंगे, अब आपसे करवाएंगे और उनकी आवाज बदल देंगे। राइट, 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 राइट। या ये भी हो सकता है कि उनकी आवाज ठीक ना हो और हमारी वॉइस ही बेटर लगे, पता नहीं। आई एम सेइंग देयर आर सिनेरियोज बहुत सारे हो सकते हैं, इसका जो यूजेस हैं, यूज केसेस बहुत सारी हो सकती हैं। तो आई थिंक अवेयरनेस, कीपिंग योर आईज एंड ईयर्स ओपन इज अ बिग वन। सबसे ज्यादा हमको सीखना है कि ये टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रहा है, कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंदार, आई डोंट अग्री विथ यू कि वक्त है। आई थिंक कि वक्त आपके हिसाब से तो वो सवाल जवाब नहीं था। मुझे लगा था वो सवाल Either you're being nice to us or you're just trying to be diplomatic कि यार ये लोग मेरे पे अभी चढ़ ना जाए सब लोग, या नहीं, वैसी बात नहीं है। really not keeping abreast of what 11 Labs is up to. No, so see, तो थोड़ा सा एक हायर लेवल, सी क्या हो रहा है सारा जो, एंड आई स्टिक टू हिंदी राइट नाउ ताकि लोगों का रिक्वेस्ट है। सी जो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज LLMs, ये वर्ड आपने सुना होगा। दीज आर कॉल्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, करेक्ट? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, या चैट जीपीटी के जो आपने अगर पढ़ा होगा तो सारा जो ये है ये ट्रेन हुआ है इंग्लिश में। ओके, इसका बेस इंग्लिश है, अभी ये रीजनल में गया ही नहीं है। तो एक होता है स्किल, मतलब और एक होती है कला, आर्ट। तो स्किल में तो क्या, मैं भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता हूं, मुझे भी माइक दे दो, मुझे लाइन दे दो, मैं भी, वो मेरा स्किल, मतलब ठीक है, आई एम स्किल टू स्पीक। बट उसमें जो कला है, वो जो इन्फ्लेक्शन है, वो जो व्हेन सामने वाले को फील आवाज से हो के साला रोमांटिक कुछ चल रहा है या उसमें दर्द है, अब ये कहां से लाओगे आप? ये आपकी कला है, राइट? इस लेवल तक टेक्नोलॉजी को पहुंचने को टाइम लगेगा, तो स्किल रिप्लेस कर देगा वो, दैट्स व्हाट आई मेंट। बट उसका जो आर्ट है वो, उसमें बहुत वक्त लगेगा। सो इसलिए जो छोटे मोटे वॉइस रिक्वेस्ट हैं, एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, सम वॉइस ओवर, सम प्रेजेंटेशन के लिए वॉइस ओवर, ये सारा इजी टू रिप्लेस है, बिकॉज उसमें कला की जरूरत नहीं है। बट जहां पे इमोशन आया, वेदर हैप्पी, सैड, एंग्री, ग्रीफ, उस लेवल तक टेक्नोलॉजी को पहुंचने में अभी वक्त है। दैट इज व्हाट आई मेंट। So if we उस वक्त को यूज करना चाहिए, उस वक्त को यूज करना चाहिए इन गेटिंग अ हैंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द टेक वर्ल्ड। और जैसा हम लोग कह रहे थे कि जागरूकता बढ़ानी चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए, अपने आप को रेलेवेंट बनाने की तैयारी करनी चाहिए, और ऑब्वियसली लीगैलिटीज को समझना चाहिए। सॉरी मोना, यू वर सेइंग समथिंग। I was just saying that if we're talking about the art and science of dubbing, for example, I think the science part will now get taken away and the art will remain with us. The art will remain with us. There is an if. There is an if. हम हमेशा सोचते हैं us actually to prove ourselves in that department, right? Yeah. That's what we're talking about, upskilling. Yeah. So like I mentioned earlier, if you can just offer more by upskilling yourself, be more aware of technology, of everything to do with it, then, and देखो क्या होता है, जमाना आगे बढ़ता है, वो तो उसे आप रोक नहीं सकते। तो उसके साथ जो बढ़ेगा आगे, वो आगे जाएगा, जो नहीं बढ़ेगा वो पीछे रह जाएगा। I mean, ये तो नियम है। I mean, this is what is happening over decades and over years, right? So उसको हम रोक कैसे सके? टेक्नोलॉजी बहता हुआ पानी है, उसको आप कितनी भी कोशिश करो रोक नहीं पाओगे। आपको उसके साथ रहना है, और आपको उसके साथ होने के बावजूद भी आपको अपने आप को रेलेवेंट बना के रखना है, और ये आसान नहीं होने वाला है। सो इफ एनीवन इज लुकिंग एट इजी आंसर्स, देयर आर नो इजी आंसर्स। ये आसान नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी टफ, बट आई थिंक वी आर ह्यूमंस फाइनली। और लाइक आई थिंक राजश्री सेड सम टाइम बैक कि इसको भी, टेक्नोलॉजी को भी इंसानों ने ही बनाया है,
and AI generative जो technology है, it is learning from humans, and we just need to be smarter. We need to be smarter. Technology is smart, but we need to be smarter. And yeah, Mandar, आपने जो भेजा है वो आ गया है हमारे पास. So with your permission, can we play it? But just for the three of you. मतलब don't play it for everyone. Okay. Then I'll tell you what. No, then I can't, because this is right now streaming live on YouTube and Facebook. Then we will not play it, because if it is not for then let's not play it at all, and we will no. Then we will delete it from our end also. Yeah, sure. Because that is absolutely. But what I will send you something else that you can play. ये हमारा कुछ काम वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये नहीं कर सकता, बट मैं आपको कुछ अच्छा भेजता हूँ, आप इसको प्ले करिए. Just give me 1 second. Okay. तो कुछ ये वॉइस इंडस्ट्री के लोगों के लिए कुछ सलाह ये है कि डेफिनेटली हर लिहाज से प्लीज ट्रेन हो जाइए. जहां आपको लगता है आप कम है, वहां पर अपने आप को ठीक कर लीजिए, अपने पुर्जे मजबूत कर लीजिए, पूरा एक कंप्लीट पैकेज बन जाइए, नहीं तो खतरे की घंटी है फिलहाल. और ये मेरे ख्याल से हाँ, और ये सबसे बेस्ट टाइम है एकजुट होने का. तो आपकी जो एसोसिएशन जो आपके लिए कर रही है, अगर अब भी आप एक साथ नहीं आए तो फिर बहुत देर हो जाएगी. फिर जिसने भी पूछा है कि डॉक्टर साहब कितना वक्त है, तो उनका जवाब होगा बहुत कम. तो अब अगर साथ नहीं आए, क्योंकि एज अ कम्युनिटी, एज अ प्रोफेशनल कम्युनिटी, इट इज हाई टाइम दैट वी ऑल्सो come across as professionals, और उसका एक बहुत बड़ा हाथ होता है उसमें एजुकेशन का. So it is now time that you take paperwork also seriously, whether it is contracts, whether it is agreements. You can no longer feign ignorance कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब फर्क पड़ने वाला है, फर्क पड़ना शुरू हो गया है. In fact, it has already begun. I will also add one more layer to it, Darpan. This is also the time to invest into relationships with your partners. क्योंकि देखो क्या होता है, आप ना बिजनेस को रिप्लेस कर सकते हो, आप रिलेशनशिप को रिप्लेस नहीं कर सकते. There's no point in offering resistance. हाँ, नहीं वो भी है, और ऊपर से फॉर एग्जाम्पल जिसके साथ भी आप काम करो, इट्स अ सॉफ्ट स्किल, जस्ट सबको साथ लेके आपको जो काम दे रहा है उसको आप बहुत रिस्पेक्ट करके, उससे रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करके, I don't know how to express this, but I'm saying just work very closely with people who are giving you work. हिंदी में हम कहते हैं कि सबके साथ बनाकर चलिए. हाँ, because क्या होता है, मंदार ये बात कोई हमारे क्लाइंट्स को भी बोले, एक सेशन रखेंगे जिस सिर्फ क्लाइंट्स का. नहीं दर्पण, कैसे अगर मेरे साथ आपका ट्रांजैक्शन है ना, तो मैं आपको रिप्लेस कर सकता हूँ, पर अगर मेरी आपके साथ में रिलेशनशिप है, रिलेशन है, या सही बात है, तो उसको रिप्लेस करना डिफिकल्ट हो जाता है. मतलब I understand. Especially when there is so much of competition from unknown. आप टेक के साथ कैसे कॉम्पीट करोगे? वो तो आपको एक वॉइस ओवर दिन में अगर 10 कर सकते हो आप, टेक तो दिन में 100 कर सकता है. बिल्कुल, कई भाषाओं में. तो आप उसको कैसे, हाउ विल यू कॉम्पीट अगेंस्ट somebody who's operating at that level of speed and scalability? Then you have to do what technology can't do, which is create human relationships. वो टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता. अब जब मोना आज बाहर निकलेंगी तो राहों में फूल बिखरे होंगे. जो सैकड़ों वॉइस आर्टिस्ट काम करते हैं आप लोगों के साथ, वो राहों में फूल बिखेरेंगे. So, एक बात बताइए, आप जो ये the AI generative foundry, if I'm not wrong, is what you mentioned that you are a part of NASSCOM का. तो जो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं हम, since हम इतनी डेप्थ में हमारे काम को लेकर AI का हमारा जो कंसर्न है, तो ये जो रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, will protecting our IP of our individual voice,
It doesn't matter whether I'm a celebrated voice or whether I'm a newcomer. It should not matter. I'm an individual and the constitution grants all of us equal rights. तो क्या जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में हुआ है, when Mr. जावेद अख्तर उन्होंने इतना काम किया और म्यूजिक इंडस्ट्री में आईपी को लेकर, रॉयल्टीज को लेकर इतने लोग आगे बढ़ गए हैं, और हमारे स्पोकन वॉइस को लेकर तो कोई ज्यादातर लोगों को समझ पता ही नहीं है. सो क्या ये जो रेगुलेशंस होंगे एआई में, will they, since you are a part of that core group, will this also apply to our individual voice IP, irrespective of whether we register a voice or not? Early days for that, but मैं आपको एक इंसिडेंट देता हूँ. Now, for example, you would have seen videos where new songs, जैसे आपने देखा होगा रब ने बना तुझमें रब दिखता है गाना जो है, उसको मोहम्मद रफी की आवाज में किसी ने Of course, it is happening. Now अरे नरेंद्र, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी आवाज में चलना मेरे यहाँ चल रहा है. करेक्ट. सो नाउ वो तो मोदी जी के तो खैर इसमें से बाहर रखते हैं, बट जस्ट लुक एट रफी साहब. अब उनका जो आईपी है वॉइस का, दैट बिलोंग्स टू हिज फैमिली. सो कल को कोई भी आदमी मतलब अपना गाना कुछ बना के रफी साहब की आवाज में या किशोर दा की आवाज में गवा देगा, तो उसको कैसे रोकेंगे आप? तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है. That's my question. कि will these regulations look at this? Yes. So what will happen is all industries will have to eventually dovetail into coming together. Music है, voice है, उनको कुछ इसके बारे में जो आपके जो फिगर हेड्स है, जो लीडिंग लाइट्स है आपकी इंडस्ट्री में, उनको एक साथ आगे like somebody should actually talk about how do you protect Rafi Saab's voice, for example, from being misused for commercial gain. अब उस बंदे ने तो मतलब as a tribute कर दिया, but there's a fine line between tribute and commercializing it, right? So वो कौन करेगा? अभी किसी ने for example अभी Beatles का नया वो तो permissions, you would have seen Beatles song, correct, that got recreated by John Lennon and all of that, right? तो वो permissions के साथ record label, the Beatles, so all of that happened officially. So I think somewhere down the line, industry has to come together and find I'm using a metaphor, a voice for themselves that can address these issues and bring it forward. यस, हमारी है एसोसिएशन, तो लोगों से हम यही हमेशा गुजारिश करते हैं कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर, इनके पास तो काफी रिसोर्सेज हैं कि वो लड़ सकें, तो हमारे पास में एक एसोसिएशन है जो हमारे लिए लड़ेगी. लेकिन अगर आप उस एसोसिएशन का हिस्सा ही नहीं बनेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा. और अगर कुछ बदलाव लाने हैं, कुछ बदलाव लाने हैं, तो अगर एसोसिएशन जाके किसी सरकारी मुद्दे पर चर्चा करे या सरकार से बात भी करे तो कुछ बहुत फर्क पड़ता है. तभी प्रभाव पड़ सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है. अगर हम अकेले सोचेंगे, नारेबाजी करके कुछ करेंगे या भूख हड़ताल करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ये नहीं हो सकता. तो इसीलिए भी, और फिलहाल तो कुछ सरकारी सिस्टम में कुछ ऐसे फेरबदल चल भी रहे हैं जिसके अंतर्गत डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि क्या हो सकता है हमारे लिए. तो इसीलिए जैसे मोना जी भी इसमें बहुत आगे हैं और बहुत कोशिश करती हैं कि लोग एसोसिएशन से जुड़े और उनकी मान्यताओं को समझें और उनके अंतर्गत जो उन्होंने लीगल एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है उसके अंतर्गत आप चलें, उसके जो फायदे हैं उसको समझें और उसके साथ चलें. धड़ल्ले से जाके कहीं भी काम मत कीजिए. तो क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये पूछिए. यू नीड टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस फॉर एवरीथिंग दैट यू डू. एब्सोल्युटली. तो लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी जो हर मीटिंग में अब साफ होता जा रहा है कि जैसे आई थिंक वन ऑफ यू सेड ना कि हमें अब ये कहना बंद करना होगा कि मैं तो कलाकार हूँ, मुझे सिर्फ परफॉर्म करना आता है. हाँ, we have to learn how to read a contract. We have to learn how to understand the terms of a contract. We have to understand the implications of what is written. क्या लिखा हुआ है, हम किस चीज पे दस्तखत कर रहे हैं, ये सब जानना बहुत बहुत जरूरी है. और थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज, एआई के बारे में कुछ समझ, थोड़ा उस पे रिसर्च, थोड़ा उस पे अवेयरनेस, ये सारी चीजें जरूरी हैं.
हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें तो ये सब समझ में ही नहीं आता, ये पता नहीं कौन सी भाषा में लिखते हैं ये लोग, ये भाषा किसको समझ में, लीगल लैंग्वेज किसको समझ में आता है, साफ इंग्लिश में लिखा होता है. You just have to try and understand or get somebody to explain it to you. You can no Absolutely. longer say that, this is not my job and I don't understand. You will be the loser if you continue to say that. इसके लिए भी AI है. There are many AI softwares now that can read a contract and give you the summaries in like, so look, this is what I call ये about तो using. ये मुझे मंदार इससे मुझे वो शेर याद इससे मुझे वो शेर याद आ गया. मंदार ने जो कहा इससे मुझे शेर याद आ गया. अर्ज किया है कि कत्ल भी वही करते हैं और मरहम भी वही लगाते हैं. तो ये आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू sum up the role of AI in our life. Yeah. We have to learn how to use it. End this at. We have to learn. Mandar, we have what you sent. If with your permission, can we play it? That one you can we play that, please? Sure. Okay, coming up. आपने क्या सोचा मैं आपको भूल गया? मेरे ख्याल से आप यही चाहते थे. Ne cachez pas une minute à pleurer, Mademoiselle Barnes. Les chatons deviennent forcément des chats. Sie scheinen immer so harmlos zu Anfang. Winzig und ruhig schlabbern ihr Tellerchen Milch. Aber sind ihre Krallen lang und scharf geworden, dann fließt Blut. A volte è la stessa mano che li nutre. Quelli che sono al vertice della catena alimentare non possono avere nessuna pietà. Solo hay una norma: cazar o permitir que te cacen. Welcome back. हाउस ऑफ कार्ड्स ये डबिंग हमने कराई थी. ये शक्ति सिंह की आवाज है, बता दूं मैं. आप ही ने तो डब करा. बिल्कुल. तो ये केविन स्पेसी सारी लैंग्वेजेस में हाउ इज ही साउंडिंग द सेम? तो क्योंकि अगर हम ने अलग-अलग ओके दैट्स फैंटास्टिक कास्टिंग क्योंकि ही साउंडिंग द सेम. या जबकि what you've done is you've morphed the visual to match the audio. I mean, the rest of the languages, all of us don't understand. But if you would have seen the Hindi part, आपने क्या सोचा मैं आपको भूल गया. I mean, see now imagine that is what our technology does. बिल्कुल. या लिप्स ऐसे मिला दिए कि ऐसा लग रहा है वो हिंदी में ही बोल रहे हैं. This I think is a very necessary part of the job, which really makes it a viewing pleasure. And do you face any resistance, Mandar, जब आप producers या actors की permission लेनी होती है ऐसे काम के लिए? अभी हमने actually उस level के देखो मोना अभी क्या हो रहा है हमने अभी so we were working on this technology for a long time, right? Because we built it everything. अभी 5 महीने हो गए हैं कि हमने इसको बाहर निकाला है. Right now we are working on smaller formats, which is advertising. अभी हमारा longer formats का POC चल रहा है. So we have a POC going on with Sony Live, with Disney Hotstar. हमने विवेक अग्निहोत्री जी की मूवी आई थी द वैक्सीन वॉर. तो उसके जो तमिल और तेलुगु ट्रेलर्स हैं उसका विजुअल डब हमने किया था. इफ यू जस्ट लुक ऑन YouTube and see those trailers, you will see Nana Patekar and Raima Sen actually looking like they're speaking in Tamil and Telugu. एंड अगर आप नीचे कमेंट्स पढ़ो तो आपको कहीं भी कोई भी कमेंट में नजर नहीं आएगा कि किसी ने लिखा रही है ये कैसा हो रहा है, ये गलत. उनको लग रहा है ये ऐसे ही शूट हुआ है, राइट? सो अभी हमारा नाउ वी आर एक्चुअली रेडी टू टेक ऑन अ फिल्म और अ ओटीटी कॉन्ट्रैक्ट. तो अभी हम बातें हमारी शुरू हुई हैं. तो ये सारे एंगल्स में हो पा रहा है, फेस के सारे एंगल्स में हो पा रहा है, एक्सेप्ट इट्स अ 180 डिग्री. हाँ, 180 डिग्री में तो लिप दिखता भी नहीं है वैसे, बट अप टू दिस एंगल मल्टीपल पीपल नॉट अ प्रॉब्लम. Wow. Yeah, because I remember everyone called Rephrase AI and they were doing the same thing. No, Rephrase AI में और हमारे में बहुत फर्क है. Rephrase AI works on text to lips as technology. तो टेक्स्ट कैनॉट कैप्चर इमोशन. तो उनका क्या होता है, एक दो वर्ड का रिप्लेसमेंट होता है, वो कर पाते हैं.
बट अगर ये लंबा सीन है, फॉर एग्जाम्पल जो ये फ्रैंक अंडरवुड वाला सीन है, आपने क्या सोचा मैं आपको भूल गया, तो उसमें टेक्स्ट इज व्हाट यू से बट ऑडियो इज हाउ यू से. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ हाय मोना, तो मेरे लिप्स हाय मोना, हाय मोना, हाय मोना. तो हमारा ऑडियो डिटरमाइंस व्हाट आर लिप शेप eventually comes to, right? Yes. So Yes. our technology works with audio as a source, and hence it can work on longer formats. Amazing. From an entire film to half an hour to 20 minutes to 5 to whatever. तो उसमें restriction नहीं है. Yes. और हम यहाँ स्टूडियो में घंटों घंटों बिताते थे लिप मैच करने के लिए. हमने अभी now we won't bother. Now we'll speak natural dialogues और बाकी सारा काम ये करेंगे. Yes. विश्वास मत, भरोसा बोलो, पता नहीं क्या क्या वर्ड सोचने पड़ते थे कि ये लिप मैच हो. इसमें हमें अभी भी लेंथ में तो मैच करना पड़ेगा. Yes. So what you need to do is match the duration and also match the silences, the pauses in between. Yes. Yes. So as long as you match that. Basically do the same lip sync that we're doing right now. नहीं, अभी तो हम फिर भी कोशिश करते हैं ओपन एंड क्लोज एंड वाउल्स मैच करने में. बिल्कुल. म प ब एंड वाउल्स मैच करने में हम कोशिश करते हैं, लेकिन Which you don't need to do anymore. वो कह रहे हैं कि अब वो भी नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ लेंथ मैच करना है, पॉजेस मैच करने हैं, बाकी ये कर लेंगे. राइट. फॉर एग्जांपल अभी बीच में हमने कुछ एक एडवर्टाइजिंग में काम किया था. देयर इज अ ब्रांड जिसका फॉर एग्जांपल राइट नाउ इट इज द ब्रांड्स नेम इज मंदार एंड नाउ इट इज नाउ मंदार न्यू. तो अब ये करने के लिए इधर दे कैन डू अ वॉइस ओवर, फिर वो न्यू अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज़ एक्टर बोल नहीं रहा, या फिर वो एक्टर्स के साथ वापस शूट करो तो रीशूट का कॉस्ट. सो दे जस्ट यूज टेक्नोलॉजी टू फिक्स इट. कई बार क्या होता है, रीशूट होता है, डायलॉग चेंज होता है, डायलॉग रिप्लेसमेंट होता है. सो ऑल ऑफ दैट कैन बी अचीव्ड बाय टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जांपल टुडे आई हैव सेड इंडिया वॉइस फेस्ट के कॉन्फ्रेंस में था और मैंने बहुत बातें की, बहुत मजा आया. ये मेरा ओरिजिनल वीडियो है. अब मुझे बोलना है मैं कल एनिमल देखने गया था और मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी, व्हाट अ मूवी. अब ये वापस करने के लिए या तो वॉइस ओवर करो या फिर वापस शूट करो, बट विद दिस टेक्नोलॉजी यू कैन मेक द सेम वीडियो speak something new context. Correct. Interesting. I think Mandar, I think this has been a very, 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 very interesting, insightful, interaction. And something you said just a minute back, I think that there lies the gist of what we feel as a voice artist community. You said our technology can fix it. So I think where we are right now is as voice acting talent, we have no problem with technology fixing things. Our problem is with technology creating our voices. So I guess that is something that we are grappling with, and that is the future that we are all dreading. But I think today the discussion that we have had, especially Mandar, your insights in terms of someone representing cutting edge technology, especially in this domain, and obviously Mona and Rajshri giving their very, very valuable points of view and inputs. I think it has been very, very educative and very insightful for everyone. And I want to end this on a very, very serious note with a very bad joke. That since Mandar mentioned कि रिश्ते बनाकर चलना चाहिए, so I'm going to make a plea to all the voice artists to start having वाघ बकरी चाय, क्योंकि रिश्ते बनाए वाघ बकरी चाय. और जोक आपको रात भर हॉन्ट करेगा ये जोक. That was a good one. But Mandar, on a serious note, thank you so much. And Rajshri and Mona, obviously Mandar, I must once again compliment you because I reached out to Mandar it was a cold reach out on LinkedIn, and thanks to Dheeraj Kumar, a very dear friend who is a very senior professional at Group M. Dheeraj referred me to Mandar, and I reached out to Mandar. I had no hopes that someone like him would even consider, and it did not take him any time
to write to me that I'm doing it, and it was very refreshing. Someone like him to be so forthcoming and so generous. So Mandar, much thank you for joining information. us. You shared so My much. And pleasure. also, Mandar, I'm inviting you on for the 17th, which is a grand finale. Consider this an invite from all of us, from the entire community. We would love to see you in person and meet you on the 17th of December at Rangshad Auditorium. It is going to be a gala time and from 3 p.m. onwards. So I hope to see you there as well, Mandar. Please My get your red pleasure. carpet outfit ready. Thank you very much. Yes, It was a there's a red carpet. pleasure. It was a pleasure to be a part of this, and meet with people who somehow either directly or indirectly create the voices that we hear all the time through advertising or through channel promos or through voiceovers or through films, and loved being a part of it, and always eager to participate in things that make lives better for all of us. So thank you for Thank you, Mandar. Thank you. There's this Thank you, Mandar. बचपन से आई थिंक मोना के साथ में भी ये हुआ होगा, अगर पता चले कि आप कुछ वॉइसिंग करते हो और दर्पण के साथ में, तो डेफिनेटली करके बताओ ना, करके बताओ ना। तो अब मंदार के साथ में होगा, करके दिखाइए ना, करके दिखाइए ना। Thank you. It was a pleasure. Thank you very much. Lovely. Thank you, everyone. Thank you, Mandar. Thank you, right. Rajshri. Thank you, Mona. Thank you. Bye-bye. Good night. Bye. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Thank you. Good night. Everyone, thank you so much. This was such an insightful, interesting, engaging, and at times even amusing. हम सब ने कोशिश की आपको entertain करने की, और at the same time हम सब ने ये भी कोशिश की कि हम सब as a voice artist community थोड़ा educate हों artificial intelligence को लेकर. I think मंदार ने, राजश्री ने और मोना ने बहुत कमाल की बातें की, अपना इतना रिच तजुर्बा हमारे साथ साझा किया, and that's what makes this platform so special. We get an opportunity to pick the brains, pick the minds of such experienced professionals from the voice acting industry. And today we had Mandar Natikar, who represents the cutting edge technology world of artificial intelligence. So you should check up neuralgarage.com or check up visualdub.ai, which is their proprietary tech. And this was day 2 of India Voice Fest 2023. It is going to be an exciting 8-9 days ahead. 7 से लेकर 15 तारीख तक we have online sessions happening every evening. अगर आपने अभी तक हमारा schedule नहीं देखा तो Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn पर जाकर check out India Voice Fest on all social media platforms or on indiavoicefest.com and check out all the wonderful sessions that are lined up over the next 8 days. Today is day 2, and we have 9 days of online sessions, followed by the 10th day, which is the grand finale at Rangshad Auditorium. If you still haven't bought a pass, this is the QR code that you can scan right now. Right now, do it right now. Right now, you can scan this code and this QR code and get your delegate pass for the grand finale. And you can also join us for the grand social networking party if you like. And so tomorrow is going to be another power pack day. Kal sham ko we have a voice acting and acting masterclass by 2 very renowned actors and voice actors, Shumanto Ray and Swarupa Ghosh. And we have the highlight of these 9 days, which is a beautiful session that we're calling Legends, where advertising legend Prahlad Kakkar is going to be in conversation with voice acting legend Chetan Sashital at 6:30 in the evening. You'll get to know about it on social media. So go check us out on social media and come back tomorrow evening at 5 p.m. for day 3 of India Voice Fest 2023. My name is Darpan, and thank you for joining us this evening. You have a great night ahead. Bye-bye.